more. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I keep my mouth shut and not listen. Afraid I'll lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Till we find a single reason not to say goodbye. I don't wanna say anything, 'cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid हेलो क्या कर रहा है? हाँ मेरी जान, क्या कर रहा है चूतिए? कुछ नहीं, स्ट्रीम चालू किया है। हाँ तो उसमें क्या कर रहा है? गेम में क्या कर रहा है अंडू? क्वेस्ट में घुसा हूँ, राइडन सोगन। Happy to teach you. तेरे वर्ल्ड में आऊंगा भी थोड़ी देर के लिए ले लेन फार्म करने। व्हाट इज दैट ले लाइन? ले लेन का मतलब क्या होता है सुअर? ले लाइन तो बहुत सारी होती है। ब्लॉसम ले लाइन करना है कि क्या करना है? हाँ ब्लॉसम ले लेन। हाँ तो ऐसा कहो। फार्म कर लो। It's the traveler and the almighty shogun. भाई How might I be of वेंटी गॉड assistance, कॉम्बो Your भाई वेंटी Excellency? ये लान। I wish to भाई borrow a बंदे tea का set कुछ from the अलग ही लेवल Yashiro क्राउड Commission. कंट्रोल है। सेटिस्फैक्शन जिस शब्द का नाम है ना, वहां से इसका उत्पत्ति होता है, मतलब जन्म होता है। कसम से भाई यार क्राउड की कंट्रोल या गैदरिंग जिस चीज को कहते हैं वो बेंटी देता है बात को। बेंटी भाई हाँ वेंटी मतलब क्राउड कंट्रोल। क्राउड कंट्रोलर सीधी बात, मतलब अलग लेवल। बस एक इन्फ्यूजन मार दे, खत्म। कोई भी छोटा एनिमी सब बेंच सब उठा लो, सब उठा लो, सब उठा लो। सबको उठाओ, एक साथ रखो, यलन कार्ट खोलो, बस प्यार से सिंगल टारगेट, मल्टी टारगेट को सिंगल टारगेट में कन्वर्ट करो, डैमेज। कचर 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 कचर। अरे भाई चल भाई छोटी चीजों को उसमें घसीट ले, बड़े वाले को घसीट लेता है, बड़े को घसीटता है, छोटे को उड़ा देता है। वाह। Oh, sure. I'll fetch that for you right away. Please step into the courtyard and have a rest, almighty shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. And the tea set. I'll bring that here as soon as it's ready. Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, I'd prefer to spend this time chatting with the traveler. Please, fetch the tea set at your convenience. इस बार बहुत कुछ स्किप I am होने your humble वाला है। servant. I daren't think of my own convenience when the almighty shogun Only graces me Archon with with her presence. weapon, I'll deal with वेंटी it छोड़ right के away. सारे सीटू, वेंटी का तो क्योंकि वेंटी का फर्स्ट वाला किसी काम का नहीं, 4 शॉट का डैमेज। हाँ सेकंड वाला कौन थोड़ा सा इफेक्टिव है, बट उसके लिए एक वर्ड मतलब फालतू है वो। क्या कॉन्स्टलेशन है वेंटी का? उससे बढ़िया एनमोरेस बाय फिजिकल। हाँ अरे एनिमोरस C2 पे काम करता है थोड़ा सा, ठीक है, बट उससे बढ़िया है कि रेड जीन अगर C4 भी हो गई ना तो वो 40% रेस कम कर देती है, और वेंटी पूरे C6 तक जाके 44% कम करता है, तो 4% कम है, तो ये C4 ही तो है जीन, एंड हीलर भी हो जा रही है, तो इसलिए वेंटी C0 विद R1 बढ़िया है। मैं LG ट्रिपल EM रखूँगा। ट्रिपल ईएम रखने की कोई मतलब नहीं है, वेंटी क्रिट कुछ नहीं करता है ईएम के साथ। EM क्रिट EM वेंटी बढ़िया है एज कंपेयर क्रिट वेंटी, मैंने देख रखा है। तो फाउनेस पे चला रहा है ठीक है, तो उसको सिर्फ ट्रिपल EM कर दे, CDCR नीचे मतलब कुछ भी रहेगा फ़र्क नहीं है ना, 800 EM कर दे और 150 ER कर दे, बेनिट खा देगा, अकेले कर देगा वो काम, जिस तरीके से काजुआ काम करता है ना वैसा है। तो कुछ है क्या यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। वेंटी का असेंशन ER है ना, 136 ऐसे ही हो जाता है उसका।
90 नहीं नहीं, तो मुझे ये तो बता इसका कर, नहीं तू इसका वो क्या करेगा? एलएजी निकालूंगा, ठीक। तो ईआर हो गया अरे मेरा। क्या फर्क पड़ता है इसको, ईएम से क्या फर्क पड़ता है मेरे को ये बता। डैमेज बोनस 16 हो जाएगा ना। वेंटी करता क्या बेसिकली, 16 करता है एंड अनिमोरेस कम करता है, दो ही उसका काम ही है। गैदर तो भाई एक तो कहने की चीज़ें है ना। कम करता है। अनीमो रेस कम करता है कौन सा आने पे, बट वीवी लगाने के बाद क्या होता है? वीवी लगाने के बाद तो जो एलिमेंट सोल्व हुआ है वो रेस कम करेगा ना। हाँ, तो वही कैपेसिटी चीज़, तो करेगा। 4 पीस वीवी वेंटी चलता है ना। हाँ तो वेंटी को रेस जब कम कराऊंगा, लाइक हाइड्रोसोल कराया जिसका तू कराएगा, पूरे टीम का हो जाता है। एंड वेंटी का जब बस्ट खत्म होता है, ठीक, तो पूरी टीम का ईआर 15% रिटर्न मिल जाता है। अच्छा ऐसा भी है। तो इसीलिए वेंटी टीम में ईआर की बीटी नहीं होती है, क्योंकि 50% दे दे रहा है। सारे ऑलरेडी तुम्हारे उतने ईआर सफिशियंट है सब पे। एंड वेंटी को 200 ईआर पे रन कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 140 मैं रिक्वायरमेंट है तो 150 160 देंगे, 800 ईएम देंगे, खत्म। 800 प्लस ईएम, ट्रिपल ईएम रहेगा मेरा। और एलजी वेपन रहेगा, सब स्टैट पे कोई ईआर नहीं होगा। क्रिट और ईएम, क्रिट और ईएम बस। मतलब एक परफेक्ट बिल्ड जिसको कहते हो वैसा कुछ। क्रिट रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी मेरे को ईआर रिक्वायरमेंट भी नहीं है उस 20 पे। Well, ईआर खुद it's ही वो not लेके आ often जाता we है have the 36 chance to chat. I'm एसेंशन। sure you must have a lot of questions. एक बार ट्रिपल ईएम कर देना, काजुआ बिल्ड दे दे बस, उसके बाद देख फ़ायदा, और ज़्यादा मज़ा आएगा। Right. Paimon wanted to ask that too. अभी तो है नहीं। The almighty shogun that he described didn't sound anything like you at all. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon, साला यार ये तो ये who was वाला जो है also my sister, कंप्लीट 20 ले लेन Raiden कमीशन। Makoto. ये He तो may हम well मैं have had an वीकली में ये inkling सब नहीं about there करता being हूँ, two Raiden हैं? shoguns, ये सब मैं नहीं करता वीकली पे। but he always acted as if he was नहीं completely मैं ये देख unaware रहा of था it. कि ये तो हम कभी अपने The वर्ल्ड में कर भी philosophy नहीं of life that he पाएंगे shared with पूरा, us just क्योंकि now, जब तक कि हम that बिना was रेजन के Makoto's view बिना on रेजन सर्च reality. करे हम कर ही नहीं She सकते। always saw नहीं things करता। that way. क्योंकि You and अगर नेट Makoto had मतलब पूरा pretty स्नेजन आया different तक भी आ Indeed, गया we तो भी did. साला हम हो उतना ही कर जाएगा, It पाएंगे। 7 was दूना 14 the होगा। biggest difference छोटा ही between होते हैं us. ना, तो फिर हम In her बिना eyes, रेजन के कह रहा हूँ the रेजन most खर्च नहीं precious करना तो। things in this world were dreams. The yearning for a better future held by living beings. अच्छा छोड़ कर लियो आके, उसकी बात करता हूँ। They are similar, but not identical. When you came charging into the plane of Euthymia, I saw human aspirations light up the sky far above in the form of countless stars. This somewhat shook me. Now, it seems like she was right, while I took the wayward path. Wow. There sure was a lot going on beneath the surface. Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, a dream is more imaginary, more abstract than an ambition. An ambition is a yearning for something material or a concrete outcome. It is finite in nature and will be replaced by a new ambition in due course. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something innate, rooted in instinct. In other words, it is something eternal. That's quite a lot to take in. Guys do like to put it glitch, simply, boom boom. Makoto wasn't concerned about outcomes. I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining eternity when things are constantly Quest moving में हूँ, forward and evolving? बंद I हो जाएगा। suppose what it comes down to is the definition of eternity she set out with. कर लियो थोड़ा सा। अरे फिर से बहुत देर का था, 5 मिनट से ज़्यादा बीत चुका है, फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। Yes, it does. दयो
Yeah. Please. I always thought that she must have grasped some elusive, Nahi re. arcane Yeah, wisdom bola to hava nahi. arrive at the conclusions she did. But in the last analysis, Tham. Makoto's बात खत्म होने दे. philosophy was, on the कितनी देर surface है? at least, an elegantly simple one. Notwithstanding that it was also the more prudent choice, based on a more mature, far-sighted Absolutely. outlook. Do you feel you're starting to understand her better now? You have already witnessed my previous views on eternity. But now, I no longer cling to what was lost. I suppose that means our differences have been reconciled. Almighty Shogun, I found a tea set. This one in particular should be fit for your excellency's use. It's quite beautiful. Thank you. You are too kind. A भाई humble यार servant कहाँ such as है? I does not Hello? deserve the यार gratitude of the down the Almighty drain. Shogun. Furina It's all पे good, sir. She's 40,000 actually XP है. pretty chill. 79 crit rate, 258 Let us crit damage. return. और We ought not keep ER11 Furuyama waiting too long. ER 11 111 4 1 बेकार है. C2 है पर with weapon. कोई फर्क नहीं पड़ता है. C2 पे फैनफेयर आता है ना कि ER आता है. C1 पे 100 फैनफेयर मतलब ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ती है एंड C2 पे इंस्टेंट गेन करती है वो 150. Raiden फोरिना का मिनिमम ER ना 140 130 ऐसा कुछ. मिनिमम 130 एटलीस्ट अगर सोलो पे भी है तो क्या बोलते सॉरी मोनो पे है तो. सोलो पे है तो 180. ये देखो योइमिया बॉन्ड लेवल शिट. क्रिट रेट 74, क्रिट डैमेज 233. ठीक है अटैक करता. हूटाओ भाई हूटाओ मां की आंख. 34,000 HP, 82 क्रिट रेट, He wouldn't have 210 gone looking for a tea set तो himself, भी would he? 103 EM. वो भी क्रिप्टन विच पे. हेलो मन लगा के बिल्ड किया है. तेरे को अभी तक का मेरे को ना वर्ल्ड बेस्ट फोरिना बिल्ड करना है अब तो. पायरो डैमेज 15%. आयुष कुमार आई गॉट ऑन पुल. ओ माय Perhaps the ley गुडनेस. lines did अरे not बिल्ड have the ब्रो. power to sustain him for I very got it, long. क्या? जॉट रेडर में As जिसको was एक the पुल पे case with the memory we saw earlier. F2P प्लेयर. कोई बात नहीं है. F2P को नहीं मिल सकता So क्या? we won't get to ऐसा drink थोड़ी his ना है भाई. tea? F2P इसका मतलब ये नहीं यार अनलकी है. Have a chance to say एनर्जी goodbye. रिचार्ज भाई. एनर्जी रिचार्ज का पीस 8% The क्रिट रेट, information 29% held in क्रिट the ley डैमेज. lines is What the complex and disorderly. बिल्ड क्या करा? भाई The 4 fact पीस that we were एम्बलम. able to Attack meet him to goblin begin है? with was a miracle of fate. रेडन पे है, रेडन है एम्बलम पे. तो Four piece अटैक emblem. गॉब्लिट देखो 10% क्रिट रेट, 15% क्रिट डैमेज. अच्छा है यार. क्रिट डैमेज का गॉब्लिट विद क्रिट रेट 10% क्रिट रेट विद यार सार से भाई मैं. रेडन का 260 250 इनगल्फिंग है तो 260 रखो 250 रखो. अच्छा है यार. 250 भाई इनगल्फिंग मेरा पे. देखो, मेरा देखो भाई भेंचुत क्या है ये, क्या रेडन है ये. 62% क्रिट रेट, 182% क्रिट डैमेज विद एनर्जी रिचार्ज, 268% एनगल्फिंग रेडन. वो थोड़ा सीडी कम करके थोड़ा सीआर बढ़ाएगा ना तो उसकी रेडन क्रिट मिस नहीं करेगी. रेडन का सीआर 675 नो क्रिट मिस बोलती. ओम यो बॉय. अरे ब्लू टाइगर तुम ही ओम भाई. अरे यार रुको 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 अभी ये पता. मेरी रेडन है. मैंने रेडन को 73 70 क्रिट कर दिया. 140 क्रिट. नहीं मेरी है 73, 160 कितना, 168, 73 168 Well, this chance won't come with often, 260 and we कितना, do have a tea 275 set. यार. Perhaps I should try my hand at making us a pot of tea. मेरे को तो अब दिख ही नहीं I've रहा. watched Furuyama शुड आई brew बिल्ड tea अ on many जीन और नॉट? occasions. या ब्रो I ऑफ doubt I कोर्स. should have any major कौन सा problems कितना है? doing it myself. C0 C1 C4 C2 what C3. The tea is ready. Please give it a try. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. I'm not I'm not sure how to explain it. You're right. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people too. Kitsune Saigu, How can I help you guys? Makoto, and all the other friends who I watched pass even further back. नहीं यार, Back तो at the Yashiro 71 Commission, I kept the conversation reasonably light-hearted. But now, Raiden, I can't help but feel a bit. Raiden, 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 Raiden,
But now, 71 165 हो गया। I'd like to broach a heavier topic, if I may. The events of 500 years ago not only robbed me of my friend, Kitsune Saiku, they नहीं also ब्रो, धीरे took धीरे ग्रो हो Makoto रहा away है, from इंडियन me फैन बेस बढ़ रहा for है। good. हाँ, जब हमने ज्वाइन करा था तब तो भाई लोगों को पता भी नहीं था, बट हाँ अभी कह सकते हैं कि कुछ लोगों को हो चुका है एंड कुछ लोगों को तो अब अच्छे से आता भी है। बट हाँ थोड़ा 73 थोड़ा और टाइम लगेगा, मे बी 1 से 1.5 साल। जेंशिन कम्युनिटी बहुत दिखने वाली है। और Raiden हाँ 73 168 275 यार। किसका? मेरा 78 73 73 मस्त। 168। बहुत चली के गटर में जा। अब अटैक कितना आया? अटैक कितना है? अटैक बहुत कम है, आई थिंक सो। कितना? 13। 1300। थोड़ा ईआर फेक और थोड़ा अटैक पे जा। अरे यार का भाई कोई अटैक का सेंस अच्छा ही नहीं है मेरे पास। अटैक सैंड क्यों चाहिए ये बता। रेडन पे अटैक सैंड, आर5 इनगल्फिंग लगा दो फिर। उससे पहले तो रेडन चलने नहीं वाली। C6 और आर5 के बिना अटैक सैंड मुमकिन ही नहीं है रेडन पे। भाई फिर नहीं हो सकता मैं नहीं इसमें का लोग उस दिन ना मैंने गलती से बोल दिया था स्ट्रीम पे कि 100 CVRT, सॉरी कितना 40 या 65 बोल दिया था, 55 को 65। बहुत सही। ठीक है, मैं कल सुबह 99 CV आर्टिफैक्ट देख रहा हूँ, सॉरी कल रात को। कैसे? कौन सा? मेन स्टार्ट अगर CD का 62 है ठीक, तो क्रेडिट उसके अंदर अगर 17% है। नहीं भाई वो 99 से भी वैसे नहीं काउंट किया जाता ना। नहीं नहीं, ऊपर वाले का बात कह रहा हूँ नहीं नहीं, सुन सुन मैं बात सुन। मैं, अलग चीज़ की बता रहा हूँ, मेरे को समझ आ रहा है। वो सर्कुलेट पे काउंट नहीं होता है। हाँ क्योंकि सर्कुलेट पे जो मेन स्टैट है CDCR का वो मेन कंप्लीट स्टैट से होगा काउंट नहीं होता है, फिर भी मैं वो अलग चीज़ कह रहा हूँ। हाँ वो तो अगर तुम्हें कहने के लिए है तो कहने के तो कह ही सकते हो कि भाई 99 सीबी है, 100 सीबी जा सकते हैं। बट वही है कि उसको तुम ये नहीं कहोगे क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 52% क्रिट डैमेज है और 15% क्रिट रेट और है, तो 15 का और दुगना करो 30। 30 और 62 तो 92%, 92 सीबी आर्टिफैक्ट बेकार है ना वो बात। जब तुमने रखी 55 लिमिट है, क्यों? क्योंकि तुमने ऐसे रखते हो ना, कैसे सीवी कैसे क्रिएट वो होता गॉबलेट है। तक वो काम आता है बस। हाँ सीवी क्रिट गॉबलेट तक वैल्यू, ही है। क्रिट वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती She है? क्रिट died in रेट that का दुगना। क्रेडिट का दोगुना disaster CD too? प्लस। Yes, तो अगर तुम she उसको went to ऐसे Konya रखोगे तो alone, वहां पे तो without अगर telling me. मतलब बहुत ब्रॉड Unlike सेंस में me, देखा जाए तो सीडी पे भी मतलब Makoto was सर्कुलेट पे no भी काम martial करना चाहिए। artist. बहुत हो जाता अब है। फॉर Whenever एग्जांपल तुम्हें similar अटैक का crises had arisen सर्कुलेट in the है या past, किसी और चीज का सर्कुलेट है, I एचपी was का है, always the हीलिंग one to बोनस का face है, तो them मैं भी in तुम her उसी का कह stead. रहा हूँ। But this time, बट अगर तुम the CDCR के circumstances were सर्कुलेट के so लिए grave बोलोगे that तो Makoto had बड़ी no बात हो choice जाएगी। but to leave me behind. और टेक्निकली इस बात के Or अंदर कोई ऐसा गलती है भी नहीं, क्योंकि दोनों इसके बातें perhaps अंदर अलग अलग it हैं। was more that she went ahead of me, इसके अंदर को तुम गलत थोड़ी कुछ put बोल रहे हो। herself in front of me, बट ये है कि जो so that I would remain CRCD के hidden. जो सर्कुलेट है उनका क्रिट वैल्यू का जो बेस होगा, वो बेस लाइन In होगी, any वो कम case, हो, वो मतलब बीच by की the होगी। time अलग I है। realized what चाइल्ड was द बेस्ट कैरेक्टर happening, ड्यूड। हाँ है, चाइल्ड अच्छा है। रिपटाइड चाइल्ड बहुत अच्छा है। या अरे यार मेरी रेडन, यार मेरी रेडन 80 की है साला, इसके टैलेंट 111 है बेंच। अभी रिटर्न का सेंसन भी तो वही होने वाला है, तेरा ईआर बढ़ेगा ना। कल अभी छुट्टी तो ले यार भाई। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं किया था, मैं किसी और जगह पे था, किसी और चैनल पे स्ट्रीम कर रहा था, बट यहीं पे होगा। रिटर्न असेंशन ईआर है ठीक है। टोटल तेरे को 133 मिलता है। 275 से मेरा 283 हो रहा है 90 लेवल। ओवर कैप्ड हो जाएगा तेरा 30। अच्छा अभी तेरे पास कैच नहीं है ना, फिर तो क्या ही टेंशन है, फिर कैच तो पे ही अच्छा तो है। है ये गांडू। हाँ फिर अच्छा कैच पे, लेकिन तेरा सीआर कुछ ज़्यादा नहीं चढ़ रहा है। 73 पूरा इससे सीआर सीआर जोड़ के बताएगा कैच का। हाँ अच्छा फिर ठीक है, मेरे को लगा कि फिर दोबारा कैलकुलेशन मार नहीं 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 पैण नहीं। बज जाती थी। it was too late. मेरा बेस स्टैट्स है 61 136। हाँ तो I फिर तेरे को arrived कैच इलेक्ट्रो पे only यूज़ ऐड in करना करोगे time पड़ेगा to कैच hear her पे, dying सॉरी breath. कैच पे अटैक यूज़ करना She had पड़ेगा। already lapsed into अटैक क्या? unconsciousness by that point, अटैक गॉबलेट। so all I हाँ और could क्या। do was enter into अटैक her गॉबलेट mind. इसका नहीं है यार, ऑनसेट और अटैक गॉबलेट नहीं है मेरे पास। As far as रेडन you're का जब तक concerned, अटैक कैप्ड ना हो it ना, would be तब somewhere तक इलेक्ट्रो similar डैमेज to नहीं the जाना plane चाहिए। of लोग Euthymia. ये नहीं समझते, लोग सीधा It was कहते हैं कि there डैमेज ज़्यादा दे रही है बस। that we bid each साला other a रोटेशन की final मार छूट गई farewell. फिर तो। डैमेज डैमेज। I cried bitterly. भाई रेडन तो भाई 108 या 113% Even in those vital moments,
I couldn't understand her रेडन actions. का टोटल Why did इलेक्ट्रो she डैमेज go पता to है कितना Kamiya आता है? first सॉरी डैमेज बोनस and कितना है not पता है? I? कितना है? Why did she 250 keep ER me in पे the dark about it? 150। हाँ Was it to shield 150 me? मुझे पता तो है। It was there मैं तभी and तो कह then, रहा हूँ गलत लेवल है वो। but 113 I के resolved 160 to pursue eternity. 113 है 160 लेवल पहुंच रही है रेडन। वहाँ As a कसम testament वो गांड to दुखा that शिट गई। लेवल है decision, फिर तो। I पूरी saved गेम her की realm of इकलौती कैरेक्टर है consciousness जो just before it 150% collapsed डैमेज completely बोनस and डीपीएस brought it सब back डीपीएस to दोनों चीज़ों Inazuma. में, फिर भी इसके पास इतना है। कसम से भाई देख अभी कितना है 116% मतलब कितना 46.6 से मेरा 116 मतलब कितना 60%, 60 भी नहीं 70% इलेक्ट्रो डैमेज बोनस मिल रहा है सिर्फ ईआर से। सोचते हैं 70.2%। सारे टोटल से बहुत जितना आता है ना वो गलत शिट कर देती है रेडन। इसलिए रेडन जितना अटैक और ईआर लेके जा रहे हो उतना तुम्हारी को भाई डैमेज बढ़ रहा है। मुझे पता है मैंने अटैक कितना स्टैक कर रखा है तब मेरा 1300 जाके अटैक हो रहा है। मेरा फ्लैट अटैक फ्लावर पे है 18 फ्लैट नहीं फ्लैट परसेंटेज देख। अटैक परसेंट 4% फेदर पे है और फिर फ्लैट अटैक इस पे है एनर्जी डीसी में रिचार्ज पे लिंक सैंड। शेयर कर दिया होता तो मज़ा आ तूने मेरा जाता, एनर्जी बोरिंग रिचार्ज हो पे गया सैंड था। सुना मैंने नहीं? किया भी था डीसी पे, क्या बात कर रहे हो देखो। वर हाँ तूने एनर्जी रिचार्ज पे सैंड नहीं सुना था मेरा क्या है? ना 27 सीडी हाँ नहीं 28 सीडी होगा। हाँ नहीं गांडू 3 क्रिट रेट 35 क्रिट डेथ। ओहो मैसिव। फिर तेरे को सीआर सर्कुलेट यूज़ करना पड़ेगा रिटर्न पे हमेशा। सीआर सर्किट विद 12% क्रिट डैमेज ये बहुत ये कम है ये। चेंज होगा, ये चेंज होगा। बट इस पे एनर्जी रिचार्ज भी है और फ्लैट अटैक भी है। फ्लैट अटैक कोई थोड़ा ज्यादा है नहीं, लेकिन एनर्जी रिचार्ज की तुम मार लोगे जिस दिन एनगल्फिंग आएगा। फिर तो तुम्हारा सीडी और अटैक ही होगा ना मेन फोकस। ईआर की Let's बेटी कहाँ आती है write a एनगल्फिंग पे? story. एनगल्फिंग पे 250 चाहिए, फिर मतलब हो जाता है कि तुम्हारा हो गया 280 ईआर, जो कि बढ़िया है भाई। कितना लेके जाओगे तुम? 280 ईआर मजाक थोड़ी ना है। एनगल्फिंग पे 150 चाहिए यार एक्स्ट्रा ऊपर से आर्टिफैक्ट से। मेरा रेडन थोड़ा भी क्वाइट खास बिल्ड करूँगा, खास बिल्ड। मैक्सिमम मेरा ईआर 270 ही जाएगा, मतलब मेरा एनगल्फिंग तो की जोड़ अभी के। 283 पहुंच रहा है। मेरा मेरा अभी भी 275 जा रहा है। एनगल्फिंग जोड़ के कह रहा हूँ। अटैक सैंड यूज़ करूँगा रेडन पे। हाँ तो मैं भी तो अटैक सैंड यूज करूंगा अगर एनगल्फिंग निकालूंगा तो बर्बाद में ही निकालूंगा अब तो। अटैक इलेक्ट्रो एंड सी आर पास। भाई तो नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, मैं फिर चेक नहीं किया। ओके कोई नहीं, अभी है When करते I हैं। returned to Inazuma, मैं पूरा दिन कल I अपनी was आईडी को shocked to find that a 100% किया, great पूरा दिन sakura ऑनलाइन tree था। had appeared on Mount Yogo. The tree that you know as the sacred sakura. चलो कोई नहीं, इसको फटाक से भी क्वेस्ट करता हूँ, फिर इसके बाद में थोड़ा आर्कन क्वेस्ट खुल जाएगा स्टोरी ख़त्म करके। That's exactly चलो what भाई everyone मास्टरनोडी back पे then ट्राई told me करेंगे as अब well. 80 लेवल की रेडन। That it had existed since time immemorial. रेडन 90 करने की ज़रूरत नहीं है, They were सिर्फ so परसेंट matter कर of लो। fact about it, and couldn't at all understand what I was so surprised about. चलो क्वेस्ट करने दो जल्दी No जल्दी। one questioned it. And yet, its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. अरे डेमो डॉज It करता है seemed as if साला। I was the only one to have noticed it appear suddenly out of thin air. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect of Makoto's consciousness. With the help of the sacred Sakura's power, I was finally able to overcome the monsters and quell the disaster in Inazuma. This is all really hard to understand. Kinda beyond Paimon's 53 के level. भाई ये टीम अगर मैं Yes, 111 टैलेंट भी है ना तो भी मैं इसको लेके जा she सकता हूँ। had such a great love for this land and for its people. 111 टैलेंट नहीं 666 टैलेंट के In साथ this ले सकता हूँ। respect, 666 I still do not compare to टैलेंट के her. साथ लेके जा सकता हूँ I मैं once 666। told myself that I would never speak of these तू events और again. जल्दी क्वेस्ट खत्म कर बे तेरे वर्ल्ड में फार्म करना है वो मैं रेडन नहीं Facing the निकालूंगा, fact that हो she is गया। gone is भोसड़ी के तेरे वर्ल्ड में फार्म करना है unbearably क्या? painful. आ जाइयो, But अभी तो even क्वेस्ट the ही चल tea रहा that is है। most वही bitter वाला भी to चलो, वही tongue, वाला बात। once नहीं swallowed, ले लाइन तो फार्म करनी ही करने leaves हैं वो भी some फार्म करने sweetness हैं। in the throat. And it's क्या कहते time हैं I गार्ड came to terms with it माइंड all. गार्ड।
कर ले। बहुत चाहिए भाई इसको। एक कंप्यूटर गेम अच्छा आया, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर नहीं है बहुत अच्छी। वाह। मैं रेडन इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस, क्योंकि ये रेडन जाऊँगा तो बिना इनगल्फिंग के मैंने रेडन आज तक चलाया नहीं है, ठीक है, मेरे को जमती नहीं है। और मेरे को जम। हाँ, और अब C2 देखने के बाद मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो रेडन अब तभी जाएंगे जब जेब में 300 पुल्स होंगे और रेडन ऐसा कंफर्म पे होगी। 20 और चाहिए तो अब भी 4 मैं मतलब। हो सके तो 1000 ड्रीम्स या तो खाज निसुत, नहीं तो सीधा स्प्लेंडर के साथ C2 कर दूंगा, फिर बाकी कैरेक्टर पे फोकस होगा मेरा। अब 1 साल बाद करे आर्कॉन से रीरन आएंगे ना, मतलब रीडन अब 1 साल बाद आएगी, तब तक मेरे पास बहुत समय रहेगा। और नाहिदा चली जाएगी तो नाहिदा को अपन विकसित पे फिलहाल के चला सकते हैं, इतना भी कोई हर्ज नहीं है। 24 मटेरियल इधर, 12 हो लेकिन गए फुरीना स्टॉर्म कर पीट। दूंगा। बस हो गया मेरा तो, रेड एंड रेज हो गई बस। आज 2 रन और, अगर 3 मिले तो 2 रन लगेंगे, 4 मिले मतलब 2 ही मिले तो 3 रन लगेंगे, नहीं तो Oh, अगर दोनों में 2-2 मिल गए तो फिर तो 4 while रन। we're on the topic, since you experienced that battle in 12 है अलग ना। क्षेत्री। person, 2-2। मैं फादर फादर तो जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, आर्कलिनो को कुछ इतना, आर्किनो को इतना कुछ सोचा नहीं, पहले था उस आईडी पे, इस पे तो नहीं सोचा है। बैटल वो पायरो है ठीक है, बट देखना है ना, पायरो में सेटिस्फैक्शन डैमेज नहीं है, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। ऐसा सेम गेम है लेकिन थोड़ा लो है, सर्वाइवल, लेकिन स्पिनोलैंड बहुत अच्छा है। कल कल है ना सुनकिन भाई लैंड। वो, क्या कहते हैं सुअर, हाँ, रेडन का डे, फार्मिंग का नहीं, परसों ने बोला संडे को करना था, सैटरडे तो संडे। कल का तो रेजन बच जाएगा। अरे सैटरडे पूरा सेव कर दो, संडे को जिसका उड़ाना है ना 10 करने दो, सीधा टैलेंट पूरा दो, बात Sister, खत्म, बाकी दिन अपना आर्टिफैक्ट और दिखता रहो। I had heard that अरे you were वो looking करना for था your ना, वो family. उठाना था। You mean to say that she was somehow involved in the Conria disaster? based on what we've learned so far, it seems so, yeah. I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I arrived, the worst of the fighting was already over. And also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma and the fate of those closest to me. So, I am afraid I can't help you. Oh, well, that's a shame. मैं But पता it can't be सुबह helped, I रात को भी guess. मैं 1:30 बजे Boy, वो करा, both of क्या you have कहते हैं, experienced जो रेजन great रिकवर हुआ था, tragedy. पहले वो क्लेम With करा this last जो cup of लिया tea, हुआ है, let us honor the फिर Team नेवी Master's करा, memory. फिर Thank you, Destiny, फिर कहीं जाके मेरी for बात giving हुई us the शुरू, chance to meet again. फिर जाके मैंने कहीं 6-7 वो करे, आरा नारा। यार के अच्छा ऐसा लोग बोल रहे हैं, खेला नहीं है मैंने। आर्क सर्वाइवल, आर्क अच्छा है बट वही है कि लोग वही प्रॉब्लम है उसका, गूगल करने ज़्यादा दो, हाई एंड पीसी पे चलता है, गूगल करके देखने दो। हाई एंड पीसी पे चलता है, बोला मैंने। हाँ तो अंबानी को बेच डालेंगे आर्क से। अंबानी को ईमेल करो रे, मंगाओ उससे, पीसी मंगाओ। अरे यार, आर्क सर्वाइवल के लिए एक बंदा मेरे को बोला था स्ट्रीम पे, वो क्या बोलते हैं अपने माइनक्राफ्ट का ही बालक है, उसके आईडी पे पड़ा हुआ है ये, एपिक गेम पे आया था, उसने बोला कि मैं दूंगा, और फिर मैं लेते लेते मैं ही खुद भूल गया उससे लेना, मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि अपने टीम पे इतने हाई एंड पीसी नहीं है, पता है। फिर मेरे को ये अच्छा लगा, लेकिन क्या सुनकुन लैंड सर्वाइवल गेम। दो मिला दो, बहन की चूत दो देते साले। पानी के ऊपर ये लैंड है। अरे ये तो ओवर वर्ल्ड गेम है, दौड़ना वोड़ना वाला है क्या? नहीं नहीं, अंडर वाटर भी है, अच्छा। 12 फिर से इसके लिए तो 15। पीसी लगेगा सुनकुन लैंड के लिए, गेम तो देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। कौन सा गेम, आर्क? ना ना, फिर सुनकुन आर्क तो भाई उसके लिए तो पीसी चाहिए था सबको। और क्या?
कौन सा गेम खेलने की सोच रहा? सुनकुन देखने को तो लग रहा है, देखना We तो। should go. Let's keep following the सुनकेन traces. लैंड है। Very well. संकेन लैंड। Based on my investigation so सनकेन far, सुनकुन I पता believe this नहीं। next एक pack of monsters should be the last. हाँ सनकेन होगा क्या और तेरा ना कुछ। दिमाग बिल्कुल, मैं समझ गया तेरा दिमाग का। दिमाग बहुत तेज है, लेकिन जहाँ पे लगाना चाहिए मैं वहाँ पे नहीं लगाता हूँ। कंटिन्यू ट्यून, अच्छा खोपचे में शायद घुसना रहता है क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा है। आई डिडंट रिमेम्बरिंग। पहले तो नाइट करना होगा, दिन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा ढंग का। सनकेन लैंड इतना अंग्रेज का चौधरी नहीं है ना, इसलिए। अंग्रेज का होता तो थोड़ा बहुत आता। कल स्कारलेट 3 बंदे खेल रहे देखा मैंने। अच्छा और ये अंग्रेज का चौथा बनने के लिए इसकी जरूरत भी नहीं है, बताऊं? इतनी अच्छी तुझे जरा इंग्लिश नहीं दिमाग आती है ना ना। बस्ती की। अरे नहीं आती ना भाई, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती। मैं क्यों भूल रहा हूँ डार्लिंग जी। कंटिन्यू जैक गॉबलेट दे दो। इसमें चल के देखता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। अटैक सर्कुलेट देते साले। अबे अटैक गॉबलेट गलत सेट पे देता कुत्ता। हरामी। गलत सेट पे देते भाई, गलत सेट पे देते। डबल भाई समझ नहीं आ रहा यार, मतलब याद नहीं आ रहा। स्काउट कासवी है ना, कासवी तो भाई टेंशन फ्री। कासवी तो सारी टेंशन की दवा है। हाँ कौन हो? स्काउट की बंदी? हाँ, वो टेंशन की दवा है। मतलब तेरे को कितना भी टेंशन है, तू कासवी को देख ली, तेरा टेंशन उतर जाएगा। ऐसे? नहीं समझा भाई ये सिंगल वालों को ही समझ आएगी, हम तो समझ। देखा कि नहीं वीडियो, ये बता बस तू। क्या? तभी तो स्काउट इतना चिल रहता है सालों, पता नहीं है तुम्हें। मैं भूल गया हूँ। साले पीस देते तो ढंग के नहीं देते हरामी यार, अभी मिल जाता। क्या करना है क्वेस्ट एरिया में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। छोड़ यार, आर्गन एडिशन नहीं पता। हाई ब्रो प्लस 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 सही। ओके, अरे पता नहीं, यहीं पे तो दे रखा है कि कुछ करने का All है। right, amuse और me. मैं भूल गया हूँ, तो मैं क्या ही करूँ। समझ नहीं आ रहा ना। कंटिन्यू द परशूट क्या है? कंटिन्यू द परशूट वजना क्या हैगा? लिटरली यार, इतना भी नहीं भूलना होता है। साइमन प्लस वो दिखा ये है। अच्छा, अभी जो इतनी देर वक्त वाली बातें चल रही थी वो वाली। मैं जीन करने वाला हूँ 80-90, मेरे पास भी वही नहीं है। और अभी मेरे पास है। अच्छा 20 तो अभी आएगा नहीं, तो मैं निकालूंगा कि नहीं कुछ पता ही नहीं। क्या करें हम इसका? कर देते यार, जीन को ही करता हूँ। सीटू जीन वाली आईडी आ रही है, फिर करेंगे क्या करना है। फ्लेक्स करेंगे। मैं कौन सी वेपन यूज करूँ जीन पे? इशिन आर खेल के कहाँ पर है? मैं तो खेल लूंगा, तुम लोग का क्या होगा। आर्क के लिए फिर गेम खरीदना पड़ेगा, वो पेड गेम है। ये काहे? उसका थोड़ा एओई के बारे में पढ़िए ना यार। नॉर्मल चार्ज और रनिंग अटैक हिट एन अपोनेंट विल रिकवर फॉर हीलिंग हील्ड। साले 180% का है। और जीन ही काम किस पे करती है? अटैक पे हील Please करती है। leave them to me. तो साले हीलिंग की एक्सपेक्टेशन लगाओ, इसी पे कितना होगा। Are you sure you're
Field activation You're healing is scaring us. 314% and attack. मोबाइल में फ्री है। अच्छा फिर तो किसी पे पेड है साला। Fear not. Fighting is what I do best. 2600 का है पीसी पे। There राइडन is no escape. नोबलेस बिल्ड C3 नोबलेस। हाँ क्योंकि इस गेम को ना नोबलेस के अलावा कोई आर्टिफैक्ट ही नहीं दिखता यूनिवर्सल पे। इसलिए बोल रहा हूँ देख C0 जो रेडन है ना नहीं चाहिए। Are you alright? I'm fine. तो डैमेज जो आता है सैटिस्फाइंग नहीं होता है। Illusion shattered. हाँ लेकिन बिल्ड करो बस पे तो जो ही मजा Now आएगा। you shall perish. There is no escape. हाँ पीसी में कौन सा वाला और दिखाओ डायनासोर वाला। Shine down. भाई मेरे पे क्या पीस पड़े हैं? डियानासोर मेरे पे हुटो पे क्या पीस पड़े हैं? फेंक दे। हुटो का तो 4 चल रहा है। 15% क्रिट रेट, 14% क्रिट डैमेज। समझ गया कॉपी पीस है। आई हैव ऑलरेडी दिस टाइप ऑफ और पीसेस। दूसरा है 10% क्रिट रेट और 17% क्रिट डैमेज। तीसरा 13% क्रिट डैमेज और 10% क्रिट रेट। छपरी बिल्ड है। नहीं अबे मैं छपरी बिल्ड नहीं, ये सिर्फ प्लूम बता रहा हूँ। सारे जो सीमे नावा के हैं मेरे पास। अच्छा क्या सारे सिम broken pieces है भाई। फ्लेक्स है सारे। यू डोंट लुक 6% गुड। क्रिट रेट, 80% क्रिट डैमेज। क्या है ये? कसम। रेडन मेरे को पसंद आई, माल अच्छी है। हमारे में ये लिखा हुआ है और नीचे 2.0 ऐसा कुछ। डिस्कॉर्ड पे फोटो भेजो स्क्रीनशॉट मार के। My अदरवाइज चाहिए तो apologies. मैं अपना भेज देता हूँ। अब मैं खाना Don't खाने जा रहा worry हूँ। about it. Just take a breather and get your strength back. ओके We'll deal with the monsters. या मॉन्स्टर आने दो। सॉरी मैं जा रहा हूँ खाना खाने। That's इट्स the same लंच light टाइम। again. इसको ऐसे ही होने देते हैं। C2G अब बताया तो रेजर राइट। पर पहले तो रेडन रेज होगी।
All right. Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here too! Are you injured, Your Excellency? I'm quite all right. Just feeling a little stiff. We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. Come on, men. They're coming back for more. Let's get them! Don't! It's too dangerous. Danger is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we never would have taken up arms to begin with. No need to worry, Almighty Shogun. When the situation looks bleak, we will draw on the power granted to us by the gods. Is that a vision? It certainly is. I know the gods are omnipotent, and their willingness to grant their power to humans means they have high expectations for us. If the Almighty Shogun is in trouble, now of all times is the moment for us to honor that. So that's how samurai of that era understood visions, huh? Nobody knew where Your Excellency had gone, and we were starting to despair. But now we've found you. You're right here with us. Just the sight of you appearing before us once more has reignited the hope in our hearts. This hope is the light that will guide us out from the darkness. Everyone, on me! We'll help too! Huh? Affirmative, but watch your backs. Protect the Almighty Shogun! Hey! Forward splash! Wait, hear me. Eat this! Out of the frying pan! Grow, grow, grow! Make yourselves a home! It seems like their attacks are finally over. I've never fought so fiercely before. Thank you all. Are you okay? Maybe you should keep resting. I'm fine. I feel much better already. You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. The monsters will definitely come back. अरे When they do, it'll तेरे be more than चेहरे a से few नजर rift ही hounds नहीं this time. हटती. खट. Quickly, escort Her Excellency back to Chal, Inazuma chal. City and regroup with the General's forces as soon as possible. When everyone sees Discord the में नहीं Almighty देखा भाई. Shogun safely returning, their spirits will be lifted. Well, what are you guys gonna do? सेम ही तो है. We will stay here and But guard phone against पे the ये monsters' 2D है, ये advance. दूसरा है. We cannot afford to let them get any further. We are brothers in arms. As long as we stick together, we can face any number of monsters that come our way. फिर मेरे को मेरे फोन में देखना पड़ेगा फिर. Dual review. Yo. Great, thanks. I appreciate it. Just leave it to us. Fighting is what we do best. But the Almighty Shogun is the only one of us with the power to change the present state of affairs. Only Her Excellency can turn back the tide of despair and lead us onward into the future. No matter what kind of threat faces Inazuma, we will always place our faith in the Almighty Shogun. इसमें वॉइस Thank you all चैट की very जरूरत much. नहीं. तो I गाटो promise की you जरूरत that नहीं I will पड़ेगा. create a bright future for Inazuma. हाँ ऐसा I हो should not सकता have है. left it this late to make this promise.
But from this moment forth, know that I shall be true to my word. Don't worry, Your Excellency. We will never doubt your word as long as we live. With you leading us, we will claim back everything that Inazuma has lost. Glory to the Shogun! Glory to the Shogun! They're gone. किधर का मेरे को रुक जा It was both. लाइव चैट करने दो यार The मेरे को people's आईडी नहीं दिख रहा sacrifice has always caused me immense pain. यूआईडी But in मेरे पास dwelling on डेली the का भी नहीं है tragedy, मैं गरीब हूँ I overlooked their splendor. The grief blinded me to how brightly they shone in their final moments. आज तक The डेली result नहीं आया being यार that in the centuries since their sacrifice, I have dishonored their will. You could take the view that whatever I say to them is meaningless, because they are but disembodied memories held in the ley lines. But even so, they are due a resolution. I owe it to them, and to all the people who have placed their faith in me to date. सेज नाया Well, Paimon thinks that even if it's a few hundred years later, you're doing right by them now, and that's what counts. Thank you for your comforting words. But this is my basic duty as Inazuma's Archon, and I have neglected it for far too long. ओह I used to शिट think मैन just पिस्टल like एनर्जी that का पानी भी samurai. तो खत्म करना है That I was first बड़े and बड़े काम हैं अभी foremost a warrior, and my only duty was to face whatever challenge came my way. But what Inazuma needs more than a warrior is someone like Makoto. Even though I am utterly unlike Makoto, and can never become the person she was, I still need to do the things that she would have done. Yes, they are. They are strong and resilient, and have much to be proud of. As the Raiden Shogun they revere, I should not be the one to hold them back. Well said. Sounds to Paimon like you figured things out. Change will come to Inazuma, and with it, new possibilities. This will take time, but eventually, the future will bring healing to the scars of the past. No matter how long it takes, I am committed to bringing this to fruition. This is my promise. Now that we've dealt with the Rift Hounds, this matter is halfway resolved. It does not appear that the threat will escalate for the time being. I will leave the Tenryo and Yashiro commissions to handle the follow-up work, such as investigating the origins of this incident and tending to the root system. Alrighty then, let's move on. मैं कहा स्टे लाइक किसी भी लोर में इतना कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा हाँ आर्कोन तो कंटिन्यू है बट स्टोरी बेस तो सबका अलग अलग है Must be all over the place right now, huh? She seems to have changed a lot since we last met her. Huh? What's wrong, eh? Come on, keep up. What's going on? Are you feeling unwell again? My body... I can't move it. क्रोजन लगा क्रोजन It looks like the situation is more serious than I thought. No need. She is calling me. The time has come. Can you help me walk? Why not? Why not? I need to go to the cave below the Grand Narukami Shrine. Why? What's in there? A battleground. One where I shall sever ties with the past and take the first steps
into the future. Good. D-look. It's 8003. एक चीज मेरे को याद आ रही है, हम दोनों की आईडी एक मतलब दो यूट्यूबरों से मिलते जुलती है। CMS जैसे हम हैं वैसे ही हुआ, बढ़िया लगा देख के। Goes up, सिग्नेचर है। एक सेकेंड, EM के साथ 2100 किधर से पूछा रहे हो? हेलो, ये हेट देखेगा ना, कूचा कूचा हो जाएगा भाई। हेड इतना खतरनाक है, सॉरी हेट बोल रहा हूँ, हेट। रहा नहीं जाता। ओरे माँ की आँख, खतरनाक मैन। 3-2 बढ़िया। फिर बाकी किधर से आया? भाई कुछ कहना ही नहीं चाह रहा हूँ मैं। मेरे पास शब्द नहीं है, बिकॉज बिल्ड बहुत अच्छा। मैं भी बोले तो इसका रिव्यू की ज़रूरत नहीं है ना। ये फ्लेक्स है, फ्लेक्स। C3 हो रखा है रे गुरु। आई सी। ये स्किल के बाद इसका नॉर्मल इन्फ्यूज हो जाता है क्या पायरो से? बाका 37 यूज कर चुके हो और 28 ही है उधर। दिलुक जिन पे है वो जाने। फ्लेक्स मार देते हो तुम यहाँ। हम खोपचे से कूदेंगे, खोपचे से। राइडन ए। हाँ अच्छा है। आदि खेलेगा, क्या खेलेगा मतलब? मैं ये वाला जो अभी है वो रखूँगा। और हाँ दिलुक बिल्ड कर जाओ। हाँ ये मेरे को जहाँ तक आता है। ओके आर्क आदि, कौन आदि? स्लेट या अभी मैं उसको डाउनलोड करेगा फिर देखेगा। आर्क PC पे देखता हूँ, फिर नहीं फिर पायरेसी हो जाएगी ना। फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा ना। इसमें घुसने के लिए साइन लगा वो लगता है ना, ग्रैनम। अरे वो सब मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को याद नहीं आ रहा है इसको कैसे खोला था। गो टू द केव, यही तो है वो केव। इलेक्ट्रोग्रानम लेके घुसना होता है राइट। हाँ क्या करना है जेंशिन में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
देखो ये सारे गेम्स चलेंगे बट इतना भी नहीं जितना चलना चाहिए, ठीक है, चिंता मत करो। जेंशिन अलग लेवल पे, अब जेंशिन को कॉम्पीट कर सके बहुत रेयर गेम ही होगा वो। अरे वो लेंस मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या ही करूँ इसका। हेलो, कुछ राज की बात। हाँ मरने नहीं, बाद में आएगा, अभी तो जेंशिन खेलो जेंशिन। अब मैं भूल चुका हूँ इसके अंदर घुसने का रास्ता। गो टू द केव द श्राइन। गड्ढे में घुस के आना है क्या? याद क्यों नहीं आ रहा, यही समझ नहीं आ रहा। हाँ ना ना, जेंशिन नहीं खेला जाता, अब नया गेम खेलने में मजा आएगा। अच्छा, और इतना दिन से जो खेल रखा है इसको ये क्या करना है? बाबू जेंशिन अपनी जगह ही रहेगा। देखो जेंशिन में करना ही क्या, डेली खाली एटलीस्ट कुछ नहीं करना तो डेली का मिशन करने लायक तो गेम खोल लो। अरे अरे माय गॉड, अरे माँ की आँख, इसकी क्या स्लिप था ये। आय 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 आय, बुरी बुरी काटी गई। ओ जेंशिन में डेली वीकली खत्म करो, इवेंट करो, प्रोग्रेस होना चाहिए। हाँ बस, वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन बाद में करना, डेली डेली वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन कौन नहीं करता है। ये रहा ग्रैनम की सील की ऐसी तैसी। We're finally here. डेली एक The गेम entrance नॉट गुड। should be nearby. नया गेम नहीं खेलो, यही सब खेलो। वर्थ इज दिस एड? कौन सा एड? Whoa! Where'd the Tory gate come from? It's getting worse again. But it's fine. I'm about to put an end to it all. This is a place इंडियन फैट बैटमैन, आई I डोंट नो। once sealed off with my own क्या ही hands. बोले अब। The entrance to Raiden Makoto's realm of consciousness. It looks like she will no longer allow me to do with this body as I please. Huh? What are you talking about? And who is she? Makoto? हर सिस्टर मकोतो, इसकी बहना। फॉलो मी। जेंशिन बच्चे को बिगाड़ती है ना, क्या है? ना 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 ना, गलत बात गलत बात। जेंशिन बहुत अच्छा गेम है, कितने अच्छे अच्छे इसमें कैरेक्टर्स है, कितना मज़ा आता है उनको देख के, आंखें ठंडी पड़ जाती है, बॉडी गर्म हो जाता है वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा गेम है, गलत बात नहीं। Paimon's dizzy. Where did we get sucked into this time? Whoa. This place. Raiden, Shogun, Yoimiya, Look Yoimiya. over there. It's another A. We meet again, traveler. This body is an assistant to the one within, but it is also the guardian of the rules. Should the one within wish to stray from the rules, this body shall stand in her way. Wait.
Paimon knows that voice. Is that the puppet? You have wandered the realm in my body, and you appear to have grasped the true essence of eternity. You believe your present self has greater certainty than your former self. Thus, you believe your present self is correct, don't you? But have you really been enlightened with new ideas? Or have you been degraded by irreversible erosion? I'm here to show you my answer. We are both warriors, and the dialogue we must now have shall be conducted by the blade alone. आर्क की जॉर्ड गेम है सेकंड, तुमने कुछ करना रहेगा, ग्राइंड करते रहना है जॉर्ड। यस, टीसी पे मिले तो गेम ऐसा चीज जिसमें रिसोर्सेज के लिए मेहनत करते रहना पड़े। रिसोर्सेज जमा इतना भी नहीं हो इस गेम में, वो चीज मेरे को बेकार लगता है। Once I started entertaining the idea of change, I became hostile in her eyes. But inside a realm of consciousness, I exist independently of her. She cannot affect me in this way. Though she is a puppet, the Shogun has her own consciousness too. When necessary, she appears here to confront me. Paimon gets that everyone has their internal battles and stuff, but not like this. It's a bit extreme. Hey, showdown with the Shogun? Never thought we'd see that day. The rules I set for the Shogun are... No. The Shogun herself is the manifestation of my past ideals. The very foundation stone of eternity. It shall not be easily swayed. I would not try to change her if it wasn't necessary. Isn't there any other way? Can't you talk it through or something? हाँ, टुकुर टुकुर देखे जा रहा है, इस ध्यान से देखे। देखो कैसे देख रहा है। अरे मैं रेडन को नहीं देख रहा हूँ, मैं क्वेस्ट को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। They both just want the best for Inazuma. My form is a symbol of supreme majesty, in which has been vested power over all the realm. It is the cohesive embodiment of all that constitutes the Raiden Shogun. It inherits A's pain, the pain of inevitable loss that comes as she moves forward. So too does it inherit her determination to reach eternity. Every action undertaken is for the sake of resisting erosion. Determination, courage, love, hatred, all of these will be degraded and distorted by the incessant flow of time. Only rules shall remain constant for eternity. Those were my thoughts when I created you. Now, they are towering obstacles that I have no choice but to overcome. You wish to make yourself my enemy? I am your past, the everlasting law, the guardian of eternity. And I am she who promised a dream to her subjects. Raiden A. In the end, even the proud and mighty Oni maiden was cut down and disgraced. देखो कैसे नहीं गलत बात। Though your blade has been cleansed of her blood and filth, never shall it shine as brightly as it once did. Inferior. बहुत बड़ी जाइमान है ये। क्या फोन फालतू गा रहा है? Weak. Pathetic. Torn to oblivion. भागती है Sweeps the land. गलती बात। Shine down. टूटेगा। Shattered. Illusion shattered. This ends now. Inferior.
Inazuma shines eternal! The kitsune sakura blossoms that once filled the skies fell to the ground as pitch black rain. इतना हील नहीं करते, उससे पहले अल्ट देते हैं। The relentless देखो erosion देखो of ये time will गरीबी। never stop. She's completely recovered? Yes. सी bitch. हो ये पंगा गलत था। Verdict is decided. अरे Sir, नीचे से भाई। this one, the fleeting shadow. फिर से भागती है। Lightning does not bend to the will of mortals. अब तो बचना। Insolent. ये गलत बात है यार, तो मार लेगी ऐसे तो। ऐसा क्यों लग रहा है यार, रिट्राई करना पड़ेगा। हेलो 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 जी। There is no escape. ओए Remove all obstacles. Shattered. Now you shall perish. The divine lightning that ये बढ़िया था। all of सेम टाइम Inazuma अगेन will हील, float silently अगेन हील, into the बात clouds. खत्म। ये 2 या 3 There बार shall हील कर never देगी। be another. और मैं खाना कहाँ से खाऊंगा? For the rest of time. आज फ्राइडे, Transcending. पर आज फ्राइडे वीकली डे होता है। पूरे मौकियाँ ये क्या था? रेडन की आंखें बहुत गंदी है। ये मार देगी, मेरे को मार देगी। बहुत बुरा बात होगा। Weak. अबे चूतिया स्किन पे निकल जल्दी। There is no escape. Inferior. The eye sweeps the lands. नहीं चल जान दे, ऐसे भी मेरे को क्या करना उधर से। ये इंसेन लेवल पे। Shine down. Torn to oblivion. Lightning falls on the land of eternity. की माँ की आँख टीपी पे टीपी लेती है भैंसड़ी। गांड मरेगी, गांड मरेगी। There is no escape. I shall not fall. ये मरेगी, रेडन मरेगी। नहीं मरेगी? फिर तो मैं तो बैटल पवाड़ कर दूंगा। Lightning, obey me. ए थाम। Your verdict is decided. Inazuma shines eternal. Fleeting shadow. फिर से टीपी इसकी जात। गलत टाइम पर टीपी लेती है। Only emptiness awaits. Have you finally defeated her? No. देखो देखो, एक भी अल्ट नहीं मारा। मारा तो क्या बात करते हो? 2 अल्ट मारे हैं। How long can your will remain strong? How the heck? In this realm of consciousness, her existence is tenacious indeed. She was built to resist erosion. Her will is stronger than any other living beings, including you and me. Then, does that mean this is gonna be a never-ending battle? Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. The future I shall forge will be a grand undertaking. One that will be resistant to erosion. If I don't do this, the Shogun's rules can never change, and Inazuma can never move forward. This is my duty. वो आईडी को बेचने के बाद ही कुछ करेंगे, क्योंकि इस गेम में जितना लगा रखा है उतना तो रिकवर हो जाए। Centuries. And no matter how many times we must fight, I आर्क will खेलूंगा। वो defeat एक her. बंदा था, उसने बोला था कि आईडी ले लो, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब पीसी पे खेलने के लिए स्टीम लैब पे है, और सॉरी स्टीम पे है, तो वहाँ पे 2600 का है। 500 years ago, humanity proved their strength in battle. Here in the present, they rely on their ambition to challenge wayward practices, tear them out like the diseased wood of an old sakura tree, so that new, healthy branches might spring to life in their place. It is about time that I learned to trust them. I understand that. But if the dreams of which Makoto spoke are true eternity,
A short moment for which the Shogun does not exist is nothing to fear. I fight for the everlasting future of Inazuma. However long the battle may last, it is but a drop in the ocean of eternity. I vow to the subjects of Inazuma that I shall one day return. This is my oath. Please, be my witness. During my absence, I place everything in Miko's hands. But this means that... Pass on my words. क्या समझे? क्या समझे? बहुत क्वेस्ट करते हो ना स्पीड रन पे. क्या समझे बताओ? Looks like we got kicked out. अभी वहां पे चलने रहा है फाइट. Are we really just gonna leave A and the Shogun to keep on duking it out in there forever? She was making sense, and maybe this is the only way to change the Shogun's rules, but still... Right? Also, A can be pretty stubborn at times, and has a history of rushing into difficult situations. What if she gets too obsessed with winning, and she forgets why she's there in the first place? It could happen, and then she might never leave again. तो उसे पहले 300 के दो. ऐसा थोड़ी ना होता है. रेडन नहीं, ए और मकोतो दोनों बहना है. रेडन है, बट ए एंड मकोतो दोनों बहना है, बहना. ठीक, ऐसा कुछ. Yeah, we should help her out, like we did last time. The quicker she gets through this, the better. Is there any way we can cut down how long she needs to spend in there? Or, you know, help her win the fight? मेरे को क्या, मैं तो पौधा हूँ. Well, whatever. We can't let anything bad happen to A while she's in there. Oh, but we also can't get in there anymore. Okay, well, first things first. We gotta find a way back in. Oh, come on, brain juice. Don't feel Paimon now. Okay. Maybe if we both ram into it at the same time really, really hard. Oh, you're right. Paimon nearly forgot about her. Yeah, Paimon. Who knows if she really understands these consciousness realm playing thingies more than we do, but there's no one else we can turn to. Alright, up the mountain we go. बड़ा कंफ्यूजिंग है यार मकोतो एंड ए का पंगा. साला पहले वो मरती है, फिर वो मरती है, फिर इससे बात कर, फिर इससे बात कर, सोचा वो पपेट है, क्या है, लोड़ा मतलब बहुत लंबा है ये. इसके चीज़ों को रिव्यू कर दो. मैंने किया ब्रो, मैंने देखा रेशियो बहुत सेक्सी है. Someone's not in the best एंड of ईएम moods. सैंड पे 2100 let me अटैक भाई guess. गजब. You're all tangled up in another situation and need me to unravel it for you. I hope you realize how lucky you are. If it was anyone else, I don't think I'd have the patience to keep greeting them with a smile after the first few times. But you're always smiling. दिख That ही रहा was a थी लुक. figure of speech. Do you सही है. understand? एंड C3 है ना Nitpicking my भाई, turns of झंडा phrase. झंडा. The sheer audacity. मेरे को बहुत प्यारा लगा. लाइक अटैक वेपन, अटैक के साथ 180 सीडी लेके जाना, अटैक मेंटेन करना, रेशियो मेंटेन करना, गजब. Oh, yeah. Something साढ़े really चुप हो big जाओ, happened. मैं देख रहा हूँ. ओह मीको को देख रहे हो. मीको. Oh, okay, I see. So, Ace decided to palm Inazuma off on the humans, while she goes off on her own to fight a fierce battle that doesn't even have an end date. Impossibly stubborn. Jumps straight to the most extreme course of action imaginable, presumes her sheer will can see her through, despite a near impossible goal that requires nothing short of the very peak of her abilities.
Yes, that sounds like A, all right. You know as well as I do that she's always been like this. Why start fretting about it now? यार रेडन का कपड़ा ना ऐसा कुछ होना चाहिए, तो वो जो रेडन के जो कपड़े हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही लटका देते हैं. Rushed into it without thinking. Well put. Oh, she acts like such a child sometimes. So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of help? Who gave you that idea? Is she playing dumb? She's doing this on purpose, for sure! Aha! You're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura, and from what I've heard, it's a little different from A's plane of euthymia. Because Raiden Makoto is no longer alive? Not just because of that. The nature of the space itself is different in some way. But I can only speculate. You're the ones who have actually been there, so you tell me. What was it like? मैं उसको बिल्ड नहीं करने वाला जो तुमको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है. 6 बस टैलेंट 666 क्योंकि बिगड़ छेड़ रखा है तो उतना ही करके छोड़ देना है. 36 32 36 आहा मेरे को चाहिए 22 25 23. Anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just be a little difficult to explain things later on, that's all. First things first. Follow me to the entrance. छिछोड़ा लौंडा होता जा रहा है वो सब. क्या बढ़िया है इसमें, क्या बढ़िया है. मेरे को इसके अंदर कुछ तो कम माल नहीं दिखता है. इससे बढ़िया तो ये है भाई, ऊपर से नीचे तक ढकी हुई है, इतना चलेगा. ये तो फैशन है. 30 24 30 बढ़िया है. कुथाई न साई कुथाई न साई. ओ माय गॉड, वो क्या चेस्ट है. अरे खुद मैं किधर से आ रहा हूँ किधर को जा रहा हूँ कुछ पता ही नहीं चल रहा. हाउ बैड मैन. वहां से दिमाग की पोपट हो रखी है. स्वर्ग तक तो मैं फॉलो कर लूँ इसको दोनों अकाउंट में. यो अरे ये गलती से पता नहीं कैसा निकला, बस निकल गया. ये नहीं होना चाहिए था. इसमें मीको नहीं होती ना तो बहुत बढ़िया होता. इसमें मीको और की गलती हो रखा है. मीको सिर्फ एक 5 स्टार में है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, नहीं तो ओनली आर्को नहीं होता इस पे. इसलिए मेरे को मजा नहीं आ रहा. मुझे दे दो, मुझे दे दो. I always have my ways. वो वाला अकाउंट ले लो. It's just a question of how crafty I need to be. To the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. Luckily, I'm A's familiar, so I can sense her rough whereabouts. In other words, even though I can't pinpoint the exact spatial location of this realm, I can still send you to where A is. So, it's abstract, but has a location, but you don't know where it is, but you can still send us there. What? Yes, no need to try and understand it. Let me put this simply. Right now, she is surrounded by chaos. Everything is turbulent and disordered. If you try to force your way in, you could be swept away by a giant wave that sets you down in an unknown corner of space-time. This is precisely why when entering the plane of euthymia, it's much safer if you place your consciousness in a physical object first. What?
Well, Paimon, stay here then. You two can go in. Suit yourself. Worst case scenario, all we stand to lose is A. So what's the big deal? Paimon's had it up to here with both of you! Fine. Paimon's coming too. Oh. Well, if you're quite sure, then of course. Now, I shall send you on your way. I say. Oh, nothing. It just seems extraordinarily chaotic, that's all. My suspicions have been confirmed. By the way, remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of abstract space. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Well then, the door's open. Hop on in. I'll stay outside and provide what stability I can. एक बार I'll be मेरा ready to लॉगिन respond if करना anything देखना happens. रिसोर्स I'm placing my खत्म god in your सब। capable hands. कौन सा रिसोर्स मतलब? For my sake and for Inazuma's, please. Bring her back. क्या कर दिया अकाउंट के साथ? Miko, अब तो मित्र you जाके better know what you're doing. That's enough chatter. Get to work. Not chit chat. Enough chit chat, man. Enough chit chat. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. गजब। Yes, guys, मेरी रिटर्न आ गई। How can this be? You have returned. But how were you able to get back in? And how come you have not changed at all in all these years? This is a duel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Your will today is as strong as it was back then. Over countless battles, not once have you lost, and never have you shown the slightest hesitation. Had I made all enemies of eternity stand against you, you still would not have wavered. For your firm commitment to enforcing the rules, you have my admiration too. You bring honor to the title of Guardian of Eternity. Now these two return once more to this space. An inevitability of fate, perhaps. Then, let this be our final duel. The conclusion to that which began 500 years ago. Final duel? So you're finally willing to... Stand back, traveler. I'm going to be the start of something new. The time our duels took to 46, fight was long enough to 42, witness the rise and fall of nations. 36. The energy they consumed, great enough to vaporize the oceans and turn day into night. And the will they demanded, sufficient to penetrate minds and crush dreams. Yet, you have endured. I will endure forever.
Witness the final calamity. इतनी सही दिखती है, कोई जोड़ नहीं भाई, रेडन का कोई जोड़ नहीं, ये बिजोड़ है। There is no escape. Inferior. Eternity is in my hands. खत्म। ये डॉचर वॉट Shine down. Inferior. रेडन जी, मैं भी इतना हल्के में दौड़ी हूँ। There is no escape. अबे थाम यार, मुंह में भी मारती है। Inferior. Illusion shattered. Inferior. Now you shall perish. Betrayal. 34, This is the 32, end. 34. You have won. I believed you were incapable of transcending the past. 36 है, 34, But 32, it seems 36. my belief was baseless, and I underestimated your spirit. But a will that cannot be eroded has no way to embrace the future. You need not worry about the future, and you aren't alone. I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this duel for sure. Yet, my reason for fighting redefined my martial prowess and redrew my limits. I now carry the gaze of the myriad of expectant eyes that look to the light in the heavens. And whenever I think of this, I feel something stirring within Muso Ishin. The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me, to encourage me. I noticed it also. Just now in the heat of battle, it seemed to unleash a new and unfamiliar power. This power is beyond the limits of my understanding. This blade belonged to Makoto. Perhaps it can only respond to me with its full power when I truly understand and believe in her. When I clasped Muso Ishin in my hands, I had the feeling that she was by my side once again. It was at once a familiar feeling and a strange one. Makoto barely wielded a blade in her life, and yet her blade brings me closer to her. You have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify the rules. From this day forth, this body will remain your assistant. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? Like, for real this time?
Greetings, those who have come to bear witness. Your boy. I am Raiden Makoto, Rat. the previous Electro What's up? Archon, who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? बहुत I'm पहले ये so स्टोरी सुना happy. था, बट आज जाके समझो You've बढ़िया come से. so far. I always knew you would make it here in the end. I Subconscious. left a faint fragment of my will in Muso Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. Goodbye, Makoto. Yeah. A convoluted way to reach you, but, कह सकते हैं. well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word I said. ये मैं तीसरी बार कह रहा हूँ. There was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came to me. दो बार स्किप मोड में किया, But- पहली बार अच्छे से सुन के कर रहा हूँ. You never mentioned this to me. Everything happened so suddenly. I'm sorry. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon could afford to ignore. वही तो बैटल In हुआ, my आर्कन present बैटल. form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced in the meantime. But I know that this must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure you must have wanted to shed tears many times along the way. Don't look down on me. See? You admit it. It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something to soothe Inazuma's pain. Here, take it, before my last shred of consciousness fades away. But it is you who must take the most important step. The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom, she who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. खत्म. How emotional.
So the A of the present planted the sacred sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her understanding of eternity is much more profound than mine. Eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, the concept of time becomes murky. बहुत जल्दी नहीं है हैं? रेडन नहीं देखना? A place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. So that was the turbulence I was sensing. Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to this point in time without any problems. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. I don't fully understand yet. But my intuition tells me that the reason for everything, it's that seed. Well, I'm not convinced that it तो was है। Makoto's power alone. I know what you mean. Perhaps a higher power really was involved in all of this. But whatever the explanation, her solution is what saved us all. Without the sacred Sakura, Inazuma would likely have been completely swallowed up centuries ago by that disaster and the filth. I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura, but to me, it has always been there. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness, but unfortunately, you never did persuade me, did you? No. But I understand why now. It was because the sacred Sakura hadn't even been planted then. But don't you think that tree looked a lot different than how it does now? The sacred Sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like it. Now we see who's pulling the बढ़िया strings. बढ़िया। I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted. We have the loving care of Kitsune over the ages to thank for how it appears today. And obviously I played my part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, centuries of battling took place on the inside, did it not? Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time within that space. Suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was not sufficient. Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection of all that you were wishing for. The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined to ultimately help A. So this time, it looks like thanks are due to you. Does that mean it wasn't by chance that we ended up at the final duel? We were always meant to be there to witness what was going to happen? I thought that the flow of time was the same on the inside and the outside, so it was a great shock to me when the traveler reappeared. My first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You came for my sake, to help me reach the best possible outcome. You too have my thanks. You have done much for me, and I will never forget it. A, how are you feeling now? My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. Have you managed to calm down? After all,
You saw Makoto in there, didn't you? I only heard her voice. I wouldn't say I saw her. I'll be fine. It brought a few things back, of course, but I've made my decision to move forward. I have to say, this has reminded me once again just how brilliant Makoto was. She predicted all the ways in which Inazuma's future could unfold, all the way back then. She even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. I just planted a seed. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see her again. That's amazing! Thank you. Today, at long last, you and Inazuma finally emerge from the shadows cast by the events of centuries past. Makoto and you are Inazuma's past and future, and both are indispensable. It's rare to hear such comforting words from you. I graciously accept them. Oh, come on. You only think it's rare because you never used to listen to a word I say. Makoto said the exact same thing! Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to, maybe, take the position of Shogun for a couple of days? Actually, no. Forget that. Far more trouble than it's worth. We will have to end the frivolities there. There is much work to be done. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. Then, we will give careful consideration to the future. After that, I will abolish the Sakoku decree. Really? That's huge news! I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, there is no further need to keep the nation under lock and key. I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. I'm looking forward to it. खत्म खत्म बेबी खत्म. मजा बोलते मजा बोलते. रुको. हाँ क्या था क्वेस्ट में. चलो अभी रेडन ने जो दिया पत्तियाँ, यहाँ पे ये रेडन का है, ये जोंगली का है, ये आरा नारा का है, ये किसके है. ऊपर जो भी मिलेंगे ना वो सारे क्वेस्ट के होंगे, आर्कॉन के होंगे. जैसे 5 आर्कॉन, एक फाउंटेन बचा है. सॉरी ये उसका हो गया, एक फाउंटेन का आएगा बीच में. ये योइमिया का है ये वाला पत्ता. योइमिया गिव यू टू रिकॉर्ड फॉर्मूला. हाँ नीचे पढ़ते हो, बड़े तेज हो रहे हो. इथुमिया ये साकुरा का है. ग्रैंड नारू का मिश्राइना, वो वर्ल्ड क्वेस्ट हुआ था योइमी को. अकॉर्डिंग टू श्राइन की क्लियरेशन, श्राइन का सारा काम इसी का है. यानी ये मैडन एक तरीके से बोल सकते हो क्या, नौकरानी है यही मी को. नहीं, केयर है, केयर, टेक केयर. दादी माँ इनाजुमा की अच्छाई और बुराई पे नज़र रखने वाली जो है वो सिर्फ योइमिया है. सॉरी क्या, यही मी को है. फ्लोटिंग जिन्नी, ये वहाँ का है, डिजॉर्ट का. इधर से ये जो है ना, ये सारे इतने नोट्स, ये बुक्स तो कुछ फील हो जाएंगी. ये जो फालतू जो चीज़ें हैं ना, ये किधर से आती है ये समझ नहीं आता है. और काई को आती है मेरे को नहीं है. ये पूरा एकदम कर कर के क्वेस्ट पूरा इधर चिपका के रखने, इतना ही यहाँ पे होना चाहिए जो मुझे किसी ने दे रखा हो, बस उतना ही. देखो ये सारे हो रखे भाई. हाउ गुड इज दिस. आई डोंट वांट टू डू अगेन एंड अगेन. हाँ वो एक अलग बात है कि मेरे को
नाड़ा पजामा करना पड़ेगा। 2 चेस्ट निकालूंगा तो ये हो जाएगा, आई नो, बट वो इजी पीजी है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं। एंड ये आहा, ये तो पीस है भाई। गोल्डन स्लम्बर पूरा होना मतलब सुकून देना है। मेरे को कुछ नहीं करना, बस क्वेस्ट ही क्वेस्ट करना है। एंड इतने प्रीमोस गए कहाँ, तो यही मीको को निकालने में लग गए। साली यही मीको किधर से आती है मेरी आवाज़। हाँ, ईटो कर दूं, आरटा की ईटो। चलो आरटा की ईटो का कर दूं। ओ नी ओ नी ओ नी, देखो कितना मज़ा आया है। मैं लिटरली यही चीज़ सुनना चाह रहा था। मैं अभी से ना 1 साल पहले या 8-9 महीने पहले ये सारी स्टोरी लाइंस को सब पढ़ा, मतलब समझा था किसी के थ्रू, एंड आज वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इथुमिया, इसलिए कहता हूँ ध्यान रखा करो, समझते नहीं हो बात को, बस मीको के प्यार में पगला गए हो। Arataki Ito. Of course I know him. We've been trying to apprehend him recently. We know he's already left Inazuma City, but with no clues to follow, we have no choice but to commission others for help, including the Adventurers Guild. Well, give me a second, ठीक, मैं थोड़ा सा RPS, हाई 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 ब्रो। मैं क्या करने जा रहा था, हाँ थोड़ा सॉक्स लेने जा रहा हूँ, मतलब पहनने जा रहा हूँ, लेने का मतलब आर्क आर्क आरा टाकी है, आर्क नहीं आरा टाकी ईटो। Oh, nee, coming through. Ito hasn't done anything seriously bad before, so it seems pretty strange. Paimon's curious. Is there any evidence of all this stuff he's accused of? Yes, of course. Otherwise, we'd never have put so many people on the case. Guys, do For fatapat, starters, boom, boom. most thieves will try to devise a way to conceal their identity, but for an Oni, the horns are a dead giveaway. I mean, the whole city could have recognized it was him. Which is बढ़िया। Oni coming through, boom bam। ये तो बहुत अच्छा है यार C6 पे। At first, he was just one of our suspects, but when we went to investigate, he personally confessed to everything and started trying to provoke the officers. What's most frustrating is that he then managed to escape along with his entire gang. He must have been planning the whole thing right from the start. Of course he did. Whether material or psychological, there is plenty of evidence either way. He's never had a Mora to his name his entire life, and he's never kept down a real job. Word is that he also takes care of someone in his gang, and that the burden of it takes quite the toll on him. After scrounging for a living all these years, maybe he thought that being the bad guy would be an easier ride. As for his psychological motives, it's a bit embarrassing to talk about, but we confiscated his vision during the Vision Hunt Decree. उठाऊंगा तो बंद हो जाएगा। At the time, Arataki Ito put up quite a fight. It took a huge amount of manpower and resources, and in the end we had to enlist the help of Kujo Sara to finally secure his vision. The Vision Hunt was a mistake, but we never expected that he would go to such extreme lengths to take revenge on us. He does sound a little unstable, just like people have been saying. If the two of you are able to capture Arataki Ito, please bring him straight here. We'll handle him from there. Thanks for all the info. ईटो को पकड़ कर ठोको। Give me a second, दोको। 133 है, 93 शायद से इसका तो मिल ही जाता पीस से। गोवा को थोड़ा बुलशिट करना पड़ेगा, बस वहीं से 19 आ रहा है ना। डैम श्योर 19, 19, 38 यहीं से पास आ रहा है। एक बार थोड़ा इधर उधर पीसेस फार्म कर लूँ फिर करता हूँ, सोच लिया है।
अकाउंट रिव्यू या ब्रदर। अच्छा बेनिट को हाइब्रिड के साथ 28,000 HP के साथ बेनिट करता हूँ 26 या 28 एंड ये पीस खाली होता है तो शैंगलिन को थोड़ा डिक्रीज करता हूँ बिकॉज सिंचू भी मैं अगर इसमें बिल्ड कर लिया ना इन्हीं पीसेस में बढ़िया रेशियो पे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ग्राइंड और कर लेंगे। तो आईडी दे दो ब्रो, नहीं तो फिर क्वेस्ट कंटिन्यू करते हैं। Arataki Ito? Oh yeah. I heard about that whole thing. I'm sure it must have been a mix-up on the Tenryou Commission's end. He could never do anything so dastardly. Huh? How can you be so sure? Is he really as trustworthy as all that? No, perhaps you misunderstand me. When I said he could never do anything dastardly, I meant he literally doesn't have what it takes. Maybe a story will explain it better. So, he used to spend a lot of time playing rock, paper, scissors and hide and seek with the kids on the streets. Okay, Kids, being kids, aren't exactly the most difficult to outsmart. I'm sure you can see what I'm getting at here. He used to lose all the time, sometimes catastrophically. On purpose, though, right? No, not at all. The one time I saw him win, he started jumping around and yelling, "I won! I finally won! I'm unbeatable!" And so on. बच्चा है वो। Then he took the वो kid's इनके साथ candy खेलता as है। his prize and ate it right there अल्लोय in front of दिखाता हूँ him. ना, जिंदा मत करो। I'll show you in Just 10 days। plain wrong. मेरा ओल्ड आईडी कवर हो रहा है, He did जिनसे take से it बात way की है। too far that time. The poor kid started crying, so I अल्लोय stepped in and अकेला gave 6 Ito a स्टार कैरेक्टर scolding. है जो He मेल was पे pretty मिली थी। quick to admit that he was fully in the wrong, and it wasn't long before the kid had stopped crying and was laughing and playing again as if nothing had ever happened. In fact, the children quite like playing with him because he's अल्लोय always serious about the stakes and never throws a game on purpose. 2071 So, I suppose what I'm trying to say पे आई is, थी is a guy मेल who पे। can't even beat kids at a children's game really gonna be capable of these kinds of diabolical deeds? Huh. He doesn't sound like a bad guy at all. In fact, he kind of sounds like a man of integrity. Yes, my thoughts exactly. Still, the Tenryou Commission's evidence against him is supposed to be irrefutable. So, I'm not trying to अल्लोय condone his देखना है। actions or anything. If he really has messed up big time, then he should face the consequences just like अल्लोय anyone अच्छी है। else. Thanks ई for the पे info. क्रायो We'll की एक keep बॉटल asking फेंकती है। around. और ऐसा मतलब वो क्या बोलते हैं यार उसको, गैस कैन होता है ना, उसके जैसा एक क्रायो की बॉटल होती है जिसको वो फेंकती है एंड अल्ट पे वो हील करती है अपने सर्कल पे। पूरा क्रायो बहुत सही लगता है वो। देखो एक 2 आईडी दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे आईडी तो बहुत सारा बट मेरे को उतना याद नहीं है। एक है देखो 855554445 ये आईडी देखो इसको डिलीट कर दिया। ये 2022 में शायद से ये जून जुलाई ऐसे कुछ खेल रहा था, तो ये वाला अकाउंट ऐसा गिवे की करने के लिए बनाया था। तो ये वाला आईडी नंबर जो है ना जहर लेवल है, मे भी मैं इसको रिकवर करवा सकता हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक टू जेनसिन। और वो वाला था 83572958 नहीं 83572947 या 299 नहीं 299 लास्ट का 2 नंबर मैं भूल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करना होगा। उस पे अलोय है तो वाला अकाउंट आ रहा है, फिर मजा करेंगे हम। 8596333497 अलोय में दिखाता हूँ, रुको। आई हैव अलोय। जेनसिन का सबसे पहला आईडी नंबर नहीं, सर्वर के हिसाब से है। जेनसिन का 4 सर्वर है, EU, एशिया, अमेरिका एंड एक बाकी सब पूरा मिक्सड अप। एशिया का 80 से शुरू होता है, यूरोप का 670 से शुरू होता है,
अमेरिका का 660 से शुरू होता है। एशिया का 800000001। 9 डिजिट का ये अभी चल रहा है ना आईडी। लू या 9 डिजिट 8 70 फिर 1। बट वे आईडी कुछ आईडी एग्जिस्ट नहीं करती हैं क्योंकि बहुत कीमती आईडी है। इवन मेरी आईडी बहुत कीमती है, मैं खाली पीली बेच दूँ तो बहुत पैसा हो जाएगा। बैलेंस प्रो बहुत अच्छा है। अरे ये इम्प्रूव करना, इसको इम्प्रूव करना, ये नहीं चलेगा। ये बढ़िया है, इसके अंदर क्रिट रेट बढ़िया रहेगा। बट इस वेपन के साथ अभी के लिए बढ़िया है, बहुत अच्छा इवन 31 HP is good, quite good। हॉर्न पे अटैक इशू है। हॉर्न पे अटैक इशू कैसा हो सकता है? अरे यार ओके, अटैक 2 के लिए जाना पड़ेगा ब्रदर। दिस वन, इसको इम्प्रूव करो, सैंड इम्प्रूव करो थोड़ा अटैक के लिए। इसको भी कर सकते हो तो ट्राई करना। गॉबलेट एंड सैंड इम्प्रूव आप कर सकते हो तो ट्राई करना। एंड इसको भी करना, 3 पीस को एकदम। फर्स्ट तो ये रहेगा आपका, सेकंड वन ये रहेगा। 2 के अटैक अगर हरन है तो 2 के अटैक, 2 के से नीचे बात ही नहीं बनती ब्रो, चाहे कितना भी इशू क्यों ना हो। रेशियो वाइज वैसे अच्छा है, बस इसको 70 लेकर चले जाओ तो बेहतर हो जाएगा। 70 या आप जितना पॉसिबल करा लो, एंड फिर 120 प्लस ER एंड 2 के अटैक। 1913 नॉट गुड। नो नो नो, ER की कमी है। अच्छा लेवल अप नहीं है, इसको एक लेवल मैक्स करो। इस पे EM के लिए पीस देखो ना, क्रिट क्यों है? EM ER देखो, सब स्टैट पे ब्रो ER लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। सिर्फ ये एक ER देगा तो आपका ER का रोल फुलफिल हो जाएगा। ये इस पे ER सब स्टैट पे होगा, और इस पर और EM ER देख लोगे तो बढ़िया है। फ्रीडम सोन के साथ आपका 1K नहीं पहुंचा EM और 150 नहीं पहुंचा ER, तो फिर काहे का फ्रीडम सोन यूज़ कर रहे हो? लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम ER आपको 150 लेके जाना है मिनिमम, एंड 1K EM ऑन फ्रीडम सोन। तो आप कोशिश करो ER दे दो, एंड ये वाला चेंज करो, EM ER के लिए देखो। कुछ मिस्ड बिल्ड ही नहीं है। CR का CR सर्कुलेट लगेगा, ये चेंज होगा। माय गॉड, बैलेंस पीस बनाओ दोनों को ब्रो, फ्लेक्स पीस से मज़ा नहीं आने वाला। ये रख सकते हैं। CR लगाओ, CR नहीं है, CR पच है, पच। अगर काजुआ कहीं भी फ्रीडम सोन पे अगर आपने 1K अटैक EM नहीं पहुंचाया तो फिर भाई कोई मतलब नहीं बनता आपका वेपन निकालने का। मतलब ऐसा बोलूँ कि ग्राइंड नहीं है फिर उस कैरेक्टर पे। क्या काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो फिर काम करो। Ito? Yeah, I've heard of the guy. Word is he did something monumentally stupid, then ran off before they could catch him.
And to be completely honest, I was a little surprised when I first heard it. Okay, well, I mean, not that surprised. Wait, you mean he already had a bad reputation? No, not exactly. He's just very overbearing in everything he does. Big and brash and always making a ruckus. So, on the one hand, he's a larger-than-life kind of guy. But on the other hand, he's emotionally volatile. फार्म नहीं करना When होता है, he's in a स्ट्रॉन्ग good बॉक्स से mood, निकालना he's as होता high है. as a kite. But when he gets upset, he gets completely enraged. I don't personally अगर आप see him आज as a के bad ज़माने guy, में but I वीवी guess I फार्म wouldn't कर put it रहे हो past him to get तो all फिर riled भाई up and lose कुछ control. नहीं कर पाओगे फिर आप. आज के ज़माने में वीवी स्ट्रॉन्ग बॉक्स से निकाला जाता है, ठीक है. नहीं पता होगा तो अभी से जान लो, कभी भी वीवी का डोमेन फार्म करने की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रॉन्ग बॉक्स करते रहो भाई, इधर उधर फार्म कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉक्स करते रहो, निकल आएगा, कहीं से नहीं आएगा. इतना अनलकी तो नहीं हो सकता कोई बंदा. काजो आए कितना टाइम हो गया. आई होप आपको पता नहीं होगा, मेरे को ऐसा ही लग रहा है मे बी वाला. या फिर आपको कहीं और अच्छा गाइड नहीं मिल पाया होगा, ये भी हो सकता है. I'm afraid that I'm not too sure myself. आप अबे डीपुड फार्म करो, ठीक है. I keep a pretty क्योंकि good आपका eye लाइकम on बिल्ड what's नहीं है. happening in the city, and as far as I can tell, he just idles the days away. When someone asks for it, he's willing to lend a helping hand, but other than that, he's just out making a scene with the kids on the street or his gang. If I had to guess, his lack of income finally drove him to do something more drastic to make ends meet. Is it just Paimon, or is this Ito fellow starting to sound pretty weird? डीपुड फार्म करके I'm स्ट्रॉन्ग afraid that बॉक्स I से don't वीवी have निकालो, much else to बेहतर tell you. होगा. He tends to spend his time with people a little more lively than myself. Perhaps you could try asking around some more. Okay, thanks. थैंक्स. अब पूछो. Too bad we still... 1 2 3 4 5 6 7 ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओह, ये कौन है बंदा? ये कौन है भाई? जेंसिन वाले से बात करूं? कैन यू हैंड ओवर मी दिस आईडी? की तबीयत ठीक हो जाएगी जेंसिन की. ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करती. ये आईडी जेंसिन देने भी नहीं वाला, चिंता मत करो. ये एग्जिस्ट करती है, बट इस प्लेयर ने बना के छोड़ दिया, इसको कुछ समझ ही नहीं आया होगा. दिख रहा है वो साफ साफ. 111223 वर्ल्ड खुल रखा है. आथर से आथर. कौन चाइनीज का 14 है? इंटायर एशिया चल रहा है ना, हम जो सर्च कर रहे हैं. जेंसिन से बात करता हूँ. मेरे को ट्री 0 से लेके यहाँ से लेके 9 तक कोई भी आईडी तो चलेगा. ये पहला आईडी है, एशिया सर्वर का पहला आईडी. 3 9. यार जेंसिन दे दो यार. Being too popular can be such a hassle. Paimon remembers that there's a detective agency here in Inazuma. Maybe we can try asking there. देख 8000000 0 0 8000000 भाई भाई भाई. Hello, we'd like to ask some questions about Arataki Ito. Oh, him
again. Sure, I have answers. We've already done some investigating for the Tenryou Commission. But first, do you have enough Moro to cover the fee? I've heard all about your travels. After everything you've been through, I'm sure you understand the way these sorts of things work. How much more are we talking about here? A one-off payment of 397,000 Mora, upfront. Plus a further 5% of your Adventures Guild remuneration as my commission, if Arataki Ito is successfully caught and brought to justice. Whoa! That's crazy expensive! How did you even come up with the price that high? Hold on. I wasn't finished. It just so happens the initial fee has already been paid in full by the Tenryou Commission. All you'll need to pay is the small commission fee. And, as for that amount, I'll settle things with the Adventures Guild once we have Ito. So, from the way I see it, you guys are getting a pretty nice deal. Now then, to give you the full picture in this case, we must first recount a well-known Inazuman fairy tale. A long, long time ago, in a village lost to time, there lived a Crimson Oni and a Blue Oni. They were the best of friends. The Crimson Oni looked fierce, but was gentle like the humans. The Blue Oni looked human, but was reclusive, like an Oni. The Crimson Oni wished to befriend the humans, but they were scared and threw beans at him whenever he came near. So the Blue Oni said to the Crimson Oni, Akka, I'll cause trouble in the village. You'll come and stop me. Then the humans will accept you. As planned, the Crimson Oni chased the Blue Oni away. The Crimson Oni's deeds spread throughout the land, and people finally accepted him. But when the Crimson Oni went to tell the Blue Oni the good news, he was gone and left only a letter behind. I went traveling. Don't come find me or they'll treat you as a naughty little Oni. But don't worry about me. No matter where I go, we'll always be friends. That's it? What about the little Blue Oni? Whatever happened to him? I suppose the Blue Oni simply disappeared, never to be seen again. Only the Crimson Oni remain now. But the Blue Oni was just an innocent little kid. बात तो सही है यार. इमोशनल स्टोरी आजकल चल रहा है ना सुमा में. Of course it does. Otherwise, I wouldn't go through all the trouble of telling it. One interpretation is that the story is actually broadly based on historical events and that Arataki Ito is, in fact, a descendant of the Crimson Oni. What I'm trying to tell you is that the Oni have sacrificed a lot in the past in order to finally integrate themselves into human society. But there are still some volatile personality traits in the Oni bloodline. Every generation of Oni inherits these traits. So while Arataki Ito has never been known to commit a wrongful act in the past, can we ever completely rule out the possibility of him one day allowing this side of him to take over? But how could he do that? After the Blue Oni's sacrifice? That would be such a betrayal. That's a very old story. Nobody knows how long it's been since the Blue Oni disappeared. We can only assume that they have long since died out, in which case, it would be quite a stretch to say it still counts as a betrayal at this point. Besides, the suspect has already confessed. What is there left to discuss? According to my investigation, he was headed southwest. I would bet he's already made it to Yashiori Island by now. The Tenryou Commission is unable to enter territory controlled by Sandanomiya troops. No doubt that's the reason Arataki Ito chose to flee in that direction. तब बाहों में आकर करो इशारों में क्या रखा है. सबसे बढ़िया प्यार करता है क्या वे. कुछ भी हो बस just stretch your legs. Don't mention it. I'm just doing my duty. Wait, Paimon still has a question. If Arataki Ito has given into his bad side, क्या वे कमीना he's लड़का है. extra mean and violent now?
I could only assume so. Judging from his previous bouts, he is a skilled fighter with a lot of brute strength. Whether or not you'll be able to handle him, that I do not know. Okay, but what's 15 GB की Japanese throwing voice beans crack है. at Oni? What use is that? Ah, yes. Now that you mention it, I seem to recall that Arataki Ito is allergic to beans. In fact, all Oni will avoid beans, but especially Ito. I heard that just touching a bean is enough to incapacitate him. If you could weaken him a bit by triggering his allergies, perhaps you'd have better luck subduing him. It's fine. He's the bad guy, remember? It just so happens that I have a bag of beans right here. I was planning to use them to make some porridge, but I think you will find a better use for them. Of course, I will charge the Adventurers Guild a fair and reasonable rate for the beans. Thanks! Doko. Let's head to Yashiori Island and start looking for Ito. नहीं कोको दुर्विन्या कोको. लड़की कौन है? कोई नहीं. संगो डिटेक्टिव. लड़की 81381385. साइनम. इतने अचीवमेंट कम कैसे रहते यार लोगों के? अच्छा समझ गया. इसका नाम होना चाहिए था राइडन आई या राइडन मक्कोतो. और ये अगर शोगन है तो शोगन अपन क्यों चला रहे? ये भी थोड़ा बहुत यार ख्याल रखना चाहिए. बढ़िया. C1 पे C2 करो भाई. C2 करो बस. मज़ा नहीं है C1 पे. नीचे मज़ा नहीं है. इधर जाना मांगता. नॉट गुड. C1 में बस स्टैक आता है ना. CR थोड़ी आ जाता है. C1 पे बस स्टैक जल्दी आता है. रिटर्न का स्टैक गेन करती है ना कि क्रिट गेन करती है. तो ये निगेटिव है. ठीक है. रेडन एटलीस्ट 65. 60 पे क्रिट थोड़ा बहुत धरती है. नहीं धरती. 65 पे धरती नहीं धरती. 70 रखोगे तो बढ़िया रहेगा. क्रिट ER ओवर जा रहे हो. ER थोड़ा सा कम करके क्रिट मैनेज करोगे तो बढ़िया होगा. This one is good. 33 CB. Also good. Nice one. फेंक दो बस फेंक दो. बढ़िया करो इसको. गॉबलेट फक्ड अप है. This one is good. You have to improve your goblet. कितना ही बढ़ा लोगे ये बात भी तो है. थोड़ा CR कहीं से लेके आना पड़ेगा यार. यहाँ सब CD चलाने की वजह से हो रहा है. आई सजेस्ट कि आप इस पे CR चलाओ एंड सब स्टैट पे CD निकालो. तो मैं कहूँगा कि रेडन भाई वर्दी होगी उस सिनेरियो पे. क्योंकि ये रेडन आप कितना ही कि एक गॉबलेट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 ऐड ऑन करूँगा. कहाँ ही आएगा. नहीं होने वाला है. CR सर्कुलेट ही जाना पड़ेगा. 260 270 कुछ एनगल्फिंग के साथ. 70 ओवर 150 प्लस. बढ़िया बिल्ड होगा. Raiden check out. Okay, wait. Jordan. बताओ good. Impressive बताओ. आहा. बोकेन. बढ़िया. बदल डालो इसको. ये क्या है यार. Nice one. Nice one. इसको इम्प्रूव करो.
और मैं इसलिए सॉरी ये नहीं, ये खोपड़ा था ना। हाँ थोड़ा इधर से सीडी ज़्यादा निकालो और थोड़ा इधर पे सीआर लेके आ जाओ। 70 एकदम नंबर दिखना चाहिए 70। बढ़िया, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है, बस हाँ बढ़िया है, वो करोगे तो बेहतर होगा आपका। 1000। हेलो। काजू अच्छा नहीं है। फैब्ज फिर भी कम है, काजू अच्छा नहीं है। किस किस पे यार मिसिंग है? ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। ईआर फच, ईआर लेके आना पड़ेगा सब स्टार्ट पे, ये चलेगा। अरे माँ, सब स्टार्ट पे ईआर लेके आओ ब्रो। ये डिफेंस कहाँ पहुँचा रहे हो यार? कौन सा पीस इतना डिफेंस? 13 HP, 13 डिफेंस। तौबा तौबा तौबा। आपका ईआर कम है थोड़ा सा। फैज पे 200 के आसपास ईआर पहुंचना चाहिए तो मज़ा आएगा। इसकी माँ का 106 हैं, बड़ा नंबर याद रखे थे हो। C2 है। काहे को यूज़ कर रहे हो यार? काहे को यूज़ कर रहे हो? ये काहे को? ये दर्द है भाई, फेंक दो। आयरन स्टिंग चला लो, इससे बेहतर होगा। फालतू का यार दिल में दर्द देते हो। ऐसे ही काजू है, मतलब फुल पावर हो जाता है। इसका टीम क्या क्या है भाई? फ्रीज है या मिल्ट है? किस पे चलाते हो इसको? बढ़िया बढ़िया। एम्बर बिल्ड करो सबकी पता है, एम्बर चल रहा है। अभी एक बंदा लेके आया था ना 38 CD क्या था, CR एम्बर एंड 238 CD। ये इम्प्रूव कर ही सकते हैं, ये भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्लैट की माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया। इसका टीम बताओ क्या भाया, या भाग गए? आया का ईयर नेगेटिव दिख रहा है, तो टीम अच्छा है तो फिर बढ़िया है। मेल्ट है तो फिर ठीक है, तो फिर बढ़िया। 470 एंड 480, 950 EM। ओवर क्रीट है। 90 क्रीट रेट क्या करोगे भाई? सीडी बढ़ाओ, सीडी बढ़ाओ, सीडी। ये पीस इंप्रूव होगा, ठीक है। ये बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। डेंड्रो डैमेज बोनस, ठीक है सब। इसको एक इम्प्रूव करो, सीडी बढ़ाओ, सीडी। सीआर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अच्छा लगा। ज़्यादा बैलेंस नहीं हो क्या? 38, 68, अच्छा है। ट्रिपल क्राउन बहुत ज़्यादा प्यार हो रखा। अरे मिस्की मौत, इसको इम्प्रूव करना भाई, जब मिले ना तो ज़रूर करना। वो पहले ही पसंद नहीं आया। इसको फेंकना है कि नहीं फेंकना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके पे कभी कमेंट नहीं कर सकता हूँ। हाँ ये ज़रूर होगा, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। खुद खुद ये भाई मस्त परफेक्ट है, ये परफेक्ट है इस पे। इसको मत हटाना बिना सोचे अभी कुछ, बट इसको ज़रूर कुछ करो, क्योंकि जब तुम्हारे पास सिग्नेचर आएगा ना अगर, तो HP डिक्रीज़ हो जाएगा। जो यहाँ से 41% मिल रहा ना, ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे पूरा CD आएगा 88, फिर 30,
CR कम है एलान। ER की एलान का टीम क्या है भाई? ये में एलान है। 60 ऐड कर दूं। परफेक्ट। CR फिर भी कम है। मिल टीम में CR 60 मिनिमम 60 होना चाहिए। 65 रखो वाइवल रहे पूरा बढ़िया रहेगा। ये बढ़िया है। अरे कितना डब्बा, रुक जाओ। पिचकारी वाला मचलो ट्रेस। थाम थाम थाम। वो पिचकारी नहीं है, कामे हम है। दिस वन इज ओके ओके बढ़िया है। ये चेंज होगा, गॉबलेट चेंज होगा। या गॉबलेट चेंज करो। CR थोड़ा सा इस पे लेके आओ। एटलीस्ट 60 मिनिमम 60 करो तो बढ़िया रहेगा। बाकी HP सब बढ़िया है। क्वाइट गुड। ये भाई 34 जा रहा है। ये इम्प्रूव होगा। इतना जल्दी तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। ये भी कर सकते हो। CDC और जाए तो बेहतर होगा। HP और अटैक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई को। गिल्डेड पे वैसे भी चला रहे तो DPS है, DPS को CR CD से मतलब होता है। ये बढ़िया है। ये भी बढ़िया है। इस पे और CD बढ़ेगा। इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड थोड़ा इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक रोल ये दो रोल फालतू बर्बाद गया नहीं इस पे। एंड यहाँ पे भी सेम हाल है। थोड़ा सा इम्प्रूव चाहिए, बाकी सब बढ़िया है। कौन इतना फ़ोन करता है? अच्छा 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अच्छा नहीं है फिर कर दो। Whatever. माँ की आँख सही है। पहले नहीं बोलना माइक ऑफ है। मामा माइक। इस कैरेक्टर को ये जो 90 का रहा है ना, पकड़ के मारो हंटर को। इतने में 2 कैरेक्टर 80 पहुंच के मतलब असेंड कर सकता था ये बंदा पहुंचा के।
417 बुक लगती हैं टोटल 0 से 90 आने को, और 207 या 205 ऐसा कुछ लगता है 0 से 80 आने के लिए। इसने पूरा फूक डाला भाई। और एक बार जो फ्रेजाइल रेजिन जो बचा है ना, उससे एम्बलम फार्म करो, फिर उसके बाद ये बिल्ड देखेंगे। कुछ वाइबल नहीं लग रहा। खुदाई ना सही बिल्ड है, खुदाई ना सही। इतना सीडी काय को दे रहे हो? EMER सब स्टैट पे ER, क्वाइट गुड, नॉट गुड। जॉर्डन है या छोला गया, ये बताओ। क्या नहीं बोला देख लो, शायद कब से बोल रहे हो। अरे क्या नहीं बोला, माइक ऑन कर, उस समय मैं फोन पे था चिंपू। और अभी 2 चीजें बोली, उसके बाद माइक याद नहीं था कि मैंने माइक ऑफ किया है। ठीक है ना, चलते हैं ना। ये मज़ा नहीं आया, हंटर को ग्राइंड करना पड़ेगा आईडी पे। और ये जॉर्डन है या चला गया, आई डोंट नो। अगर जॉर्डन भाई हो तो अपना यूआईडी दे दो, अदरवाइज हम चलते हैं क्वेस्ट करने। रायतम ब्रो बिल्ड करो, मज़ा है यार। अगर आपको बढ़िया नहीं लग रहा है, डबल एट इतना डबल एट आईडी रिव्यू प्लीज। कुछ सुनाई नहीं दिया था भाई, बोल रही थी तू। वही कह रहा हूँ, तुमने जो चीज़ें बर्बाद करी है ना, पकड़ के मारो इसको सब। इसने बुक का अंधा भाई, अंधा वेस्ट जो कहते हैं ना, वो किया इसने। शांगलिन को 90 काय को करा यार, ये बता थोड़ा। चलो माना कि ज़्यादा बुक हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एक कोई धड़के कर दो और बाकी पड़ हुए। करना है तो काजुओ को कर लेते, डैमेज बढ़ा देता, 90 करते थे। अरे मैं तो राजा हूँ, मैं तो हूँ। अरे बेटे, 88 काटो। कौन है ये बंदा, इसको बुलाओ यार, इसकी आईडी लेते हैं। कितना ये बंदा लकी होगा यार, मतलब इसकी आईडी 9 बार 8 से भरी हुई है। हाउ मच लकी इज ही। कांदा कांदा, और बिल्ड फिर भी गोबर है भाई। ये लो, एनगल्फिंग लाके ऐसा कोई रखता है क्या? पर वो भी इस रेशियो के साथ मज़ा नहीं आया। फक्ड अप सिमुलाक्रा, फिर भी फक्ड अप। वो यहाँ का एक नंबर नहीं है, 69 अमेरिकन सर्वर है, यूरोप का 7 है। एशिया का 8 है, और बाकी सबका सैंडविच वाले का शायद से 9 है क्या, 9 या 5 है। तो इसी बात पे लाइक मारो। क्यों, मेरा पहला प्यार है गेम में शांगलिन। पहला प्यार है तो प्यार को बढ़िया बिल्ड दो ना, इसका मतलब प्यार की मार थोड़ी ना लो। 6969, चलो इसकी बिल्ड भी रिव्यू कर ही लेते हैं। 8 पहला डाल दो, 69696969। बड़ा गद दिखा दी, क्या हो गया? ये बैरिक वर्ल्ड खोल के छोड़ रखा है। क्या ही बेकार बेकार लोग हैं। मेरे को ना बस एक बार 000000, अगर ये वाला अकाउंट अगर जेंसिन दे देता है, ठीक है 25, ये खेल रखा है किसी बंदे ने, मैं कह रहा हूँ पार्टी कर दूंगा इस आईडी पे, सिर्फ ये आईडी मिल जाए तो। लेकिन देगा नहीं, जेंसिन की भी अपनी पॉलिसी है, किसी भी गेम की अपनी पॉलिसी है। अरे ओनी किधर है ओनी? ठीक है ना, ओनी एक पत्थर पे तो रहेगा। मैं एलिमेंटल साइज यूज नहीं करूँगा, अब बताओ।
अरे हाँ ऊपर साइड से रहता है, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो बस थोड़ा थोड़ा कहीं एक खोपचे पे रहता है बस। वो निकाबू तो पत्थर पे नहीं। According to Detective Sango, Ito should be somewhere around here. Catherine mentioned that according to Detective Sango, Ito should be somewhere अच्छा around here. बार बार यहीं पे मेरे को ये एलिमेंट साइज करवा के मानेगा। There's a camp here, but nothing stands out as particularly noteworthy. Let's keep moving forward. क्या गेम है यार, यार नहीं भी। अरे तो मेरी जो मेरा है वो मेरे लिए रहेगा ना, मैं क्यों ऐसे भेज सकता हूँ? इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। Could that be him? Is that Arataki Ito? Yes. Doesn't seem to be looking this way. Perfect. Let's try the beans Detective Sango gave us. It'll save a lot of hassle if we can avoid a fight. फूडीना ओ हेलो, नज़र नहीं डालने का उस पे, वो उसका मैंने बहुत 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 कुछ कर दिया उसके साथ। ये तो मेरे हाथों में फूट गया। Beans. ऐसा था ओके। रोतड़ो वीटू। Are you okay? What should we do? Paimon didn't think he'd react this badly. Don't be alarmed. नहीं दूंगा। It's just my allergies acting up. I've got it under control. It's all right. I got this. I just gotta tough it out. I can take it. I can take it. Who am I kidding? I gotta catch my breath here. Whatever it is you want, it's gonna have to wait. I need a moment. देखो मेजॉरिटी ऑफ जितनी भी एपिक्स नंबर है जेंशिन से बात करोगे तो भी नहीं देगा, क्योंकि आईडी की प्रूफ मांगता है वो। इवन तुम अपनी आईडी जेंशिन से बोलो कि मेरे को रिकवर करनी है, वो सारे प्रूफ्स मांगेगा तो ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, और जेंशिन कभी किसी का आईडी भी किसी और को नहीं देगा, और रिकवर तो होने नहीं वाली। You can never do it, don't for Hey, whoa, take it easy. Just stop with the beans, okay? So you're here to bring me in. How in the world did you find me all the way out here anyway? Well, whatever. You think I'm going back with you? You can forget it. I'd walk away if I were you. I pack a mean punch, you know. I don't want to hurt any regular folks like you. That's pretty big talk considering all the beans we have. कम से कम पाइमोन दे दो यार, नहीं था, या फिर तुम सब ले लो, रेडन फुरीना छोड़ो, तुम सब ले लो। यलान वेलान भी छोड़ना पड़ेगा, वेंटी ले लो, जोंगली ले लो, नाहिदा ले लो, ठीक है, आथर ले लो, लुमीन ले लो, और फिर तुम पाइमोन ले लो, ठीक है। Yep, that's right. Me, all by myself. Nobody else. यलान छोड़ दो, रेडन छोड़ दो, फुरीना छोड़ दो। Nab a little food and drink when we're running low. That's only natural, right? मीको छोड़ दो। Nabbing people? That's
taking it a निगवांग bit छोड़ far, दो। don't you think? Not when their families will pay good Mora to see them again. Easy pickings. And the extra Mora means I can, give some to my gang to spend on themselves. अच्छा अच्छा ले जाती हो तुम एक धीरे फोर्श। नहीं 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 नहीं, मैं बहुतों के साथ है। रीडन है, निकवांग है, फरीना है, मीको है, गान्यू है, योइमिया है। मैंने तो कितनों का तो फोटो रख रखा है, एकदम गलत लेवल, गलत। सबसे खतरनाक यूला है बस शुरू शुरू पे। यूला से खतरनाक कोई नहीं पूरे मॉन्स्टर में। Hey, what's with all the questions? Like I said, I'm not going back with you, so stop wasting everybody's time. No way, mister! We've accepted a commission to bring you back! What did you say, little one? Go on, say it to my face. जंगली के पिलड़ पे खड़ा हो जाना। Well, mostly he took a commission to bring you back. Looks like you aren't gonna let this drop. In that case, you gay. Uncle Ito! Don't run now. Careful or you'll fall. What's taking you so long? You said we were gonna have a beetle fight today. Come on, you promised. Yeah, that's right. Still going ahead. But you see, ये 106 की तरह I've दिखता been है। out here for ages, and I still can't find a beetle that I like. So, just give Uncle Ito a little more time, okay? Huh? Who are they? Are they your friends? Yeah, that's right. I told them not to come, but what can I say? They were just too worried about me. It's because of a little thing called, prestige. Yeah, because of all the prestige Uncle Ito has. Huh? What are you talking about? Come on, just play along. Leave the kid out of this. Uncle Ito, you don't look so good. मेरी है, उसे You किसी look ने like you're छुआ about तो to fall over. घटिया खड़ी कर दूंगा। ठीक है, बताता हूँ मैं। Because Uncle Ito छू bumped के his दिखाता noggin हूँ। on a tree branch while looking for a beetle. Uh-oh. It's all good though. These horns are rock solid. Okay, if you say so. Granny and I will keep heading back now. Wait. Don't be too long. I'll show you मीको। किसी ने छुआ तो, अरे मैं तो दिन रात देखूं मीको की ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं। कौन सी दिखाऊं? वो दिखाऊं जो तुम झेल पाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, तो बीटी हो जाएगा। मैं दो चीज़ें दिखाता हूँ। योइमिया की भी दिखाई देता हूँ, तुम भी क्या खुश हो जाओगे। देखिए योइमिया, और दूसरी ये योइमीको। किधर है किधर है किधर है? इतने सारे फोटोज़ में से एक फ़ोटो निकालना भाई इजी थोड़ी ना है। It's too tough. मिला 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 मिला। आय हाय हाय, यही मीको। बताओ क्या देखना है? मीको देखना है ना सबको? लो मीको दिखाता हूँ। डिस्प्ले, ये देखो, साइड में देखो, यही मीको एंड योइमिया। ठीक, एकदम साफ साफ दिख रही है ना? एक और फोटो दिखाता हूँ यही मीको की। इसने देखने की बात की, छूने की बात की है ना? हर्ष दिख रहा है कितनी सही लग रही है ना यही मीको। एक और दिखाऊं इसका एकदम बढ़िया वाला वर्जन। यही मीको को देख के इसे रूह कांपता है। मतलब ऐसी ऐसी फोटोज बड़ी पड़ी हैं, लेकिन स्ट्रीम पे नहीं दिखा सकता, नहीं तो बैन हो जाऊंगा। लगता है हर्षु का मन भर गया। अरे इतना भी ताड़ ताड़ के मत देखो, जल्दी बताओ।
छोड़ो, ये देखो, ये यही मीको है, कैसी है, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है, इतना दिक्कत नहीं लेने का। गड़बड़ गड़बड़ ऐसे बोलते मीको। Yep, I'll be right there. शैंगलिन सबसे Hope you're ready सीधी to है, lose today. हैं? दिखाता हूँ। The old lady was Granny Oni. She's the one who took me in and raised me. इसने And the कुछ kid's गलत name is Daisuke. I took him in just a while back. They're both like family to me. शैंगलिन सीधी है, शैंगलिन। रुको रुको, मतलब अब तुम एक जानवर को भी नहीं छोड़ोगे तो? अबे उल्फ है, भीड़ियाँ। आय हाय हाय, कौन बोलता है कि शैंगलिन सीधी है? ये फोटोज देखने के बाद तो शैंगलिन कुछ ज़्यादा ही टिगड़ी है। नहीं, दिखाना नहीं प्रेफर करूँगा, इसका कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। फिर 4 स्टार है इसलिए ज़्यादा उसका शोकेस नहीं होता, ठीक है ना, वरना वो थोड़ी भी सीधी नहीं है। वो भी, उसके भी वो 32, 36, 34 वाले सीन है। ओ माय गॉड, ये क्या शैंगलिन है, जस्ट लुक एट दिस गाइस। क्या शैंगलिन है, जहर। ऐसी अच्छी बातें नहीं करते इस गेम में, कोई बढ़िया नहीं है। They escaped with me out this way, along with my boys from क्या the Arataki जानवर gang. नहीं होता? If I didn't bring him with me, मीको the जानवर थोड़ी Tenryou है, Commission would be फिर knocking भी on their मारूंगा। doors for sure. वो कुछ भी हो, मैं तो मारूंगा। Right. But if you care about them so much, then you shouldn't have done all that stuff that made them worry about you in the first place. Listen, how about we make a deal? You two let me go wrap things up with Daisuke, and once we're done battling beetles, the two of us will settle things with a duel. कोई If कोई you सीधा win, नहीं I'll है। come quietly. You can take me back to Inazuma City, and you won't hear a peep out of me. Why? यहाँ पे 'Cause I'm an आयाका, Oni of my गान्यू, word. सबके पड़े, सबके। I'll just tell little Daisuke that my friends and I need to step outside for a moment. That way you won't worry. Cool? नाहिदा छोड़ के सबके हैं। What should we do? There is the kid to consider. हाँ, निगवांग के देखोगे तो बेहोशी वाली तो है, थी कुछ, बट हटा दी। अब निगवांग का उतना नहीं रखता हूँ, नहीं तो निगवांग तो पहले उन दुनिया की, क्या बोलते, एक बार 99 खिली खींची भी दिखा तो सब मिल जाएगा। सिंचू का दिखाओ तो मत, लॉन्डो साला ये के नशे करते ही। देखो ये लान के हैं, मैं निकाल रहा हूँ, पहले निकाल ले तो फिर दिखाता हूँ। आयाका किधर गई? ये आयाका के हैं। ये लान का भी नहीं। अब किसका बचा? गान्यू। ये गान्यू क्या, ये निगवांग क्या। ये निगवांग का, ये यूला है, सिंचू का वैसा वाला फोटो नहीं मिलेगा जैसा तुम खोज रहा हो। ये राइडन है। अब बहुत बहुत खोज लिया, ठीक है। ये देखो, राइडन, यूला, निगवांग, गान्यू, आयाका, येलन, यम्मी। रात को देखो, मजा आएगा। Oh, it's on! I like your style.
Alright, but first things first. I need to find an Oni Kabuto to battle with. I've been looking here for ages and haven't found myself a winner yet, so it's time to try somewhere else. Come with me. Saves you worrying that I might बाद में skedaddle. मैच चला मुठिया ओके ओके सिंचू को नहीं कह सकता पूरा फ्लैट अबे सिंचू लड़का है लड़की नहीं पूरी फ्लैट है घोसड़ी गलत लेवल पे मतलब कुछ भी वो पूरा फ्लैट है पूरी फ्लैट नहीं है वो लड़का लड़का हरकतें देखो इनके देखो इसके जैसे है ना सबके वैसे ही है मतलब मैं सोचता हूँ कि इस गेम के अंदर ना थोड़ा भी हुआ देखो इसकी यहाँ देखो कितनी पतली है यहाँ पे देखो कितने चौड़ी है ये देखो कितना चौड़ा मतलब क्या ही भाई यहाँ पे अगर 32 है तो यहाँ पे 36 है ठीक 30 नहीं यहाँ पे 34 32 36 ऐसा है इसका सब गलत है सब सिंचू लड़का लड़का किधर है वो इसमें नहीं है रुको कैट आर्काइव सिंचू डिटेल्स प्रोफाइल सर्च कर ये जाके इसकी वॉइस पैक सर्च करो पता चल जाएगा ये लड़का है इसका बाल देखो ठीक है ये लड़का है पूरा लड़का इसका मैं वॉइस पैक किधर से सुनाएगा यहाँ से मैं वॉइस पैक नहीं सुना सकता ये तो मैं पक्का सुनाता जंगली का टैलेंट दिखा दो लड़का है लड़का भोचड़ी का साले ये हो इसका मतलब सबके सब उसमें भी मजे सिंचू में भी मजे देख रहे हो योइमिया खतरनाक है Even though they might look menacing on the outside, they're big softies on the inside. Most of the time, they're just sitting there doing nothing. But let me tell you, once the Oni Kabuto start fighting, they won't let anything get in their way. Wait. Genshin. सब तो नहीं दिखा सकता बट बहुत कुछ दिखा सकता हूँ स्नेह रह गई अरे भाई उसकी भी है चिंता नहीं करने का क्या माल है आया का दोस्ताना पार्ट 2 बनने वाला है क्या हो सकता है ट्रैवलर अरे भाई ज़्यादा हो गया क्ली का नहीं रखा है मैंने क्योंकि वो बच्ची है ना तो बच्चियों पे अपन जुल्म नहीं डालते ये स्नेह का है खतरनाक माकोतो राइडन अच्छा गेस नहीं वहाँ बीच में थोड़ा बहुत फोटोज रहेंगे ना ऐसा थोड़ी कि मतलब उसके लिए थंबनेल एडिट के लिए रखा है मैंने आया का देखो मीको का साइड प्रोफाइल कितना खतरनाक है इवन मेरे को पूरा क्लियर दिख रहा है मीको का ये छोटा फोटो किसी काम का नहीं ये वाला भी डिलीट कर ही दो बताओ ये भाई ज़्यादा हो गया वो अबे थंबनेल एडिटिंग ख़त्म बोलती ख़त्म मेरे को वापस से फाइल नहीं खोलना चाहूँगा तो कहाँ से करूँ बैक करूँ वापस से जाना पड़ेगा वहीं पे दोस्ती अभी अनबशी वाला भी अरे वो नहीं दिखा सकता ना वाईटी मेरे को बैन कर देगा नहीं तो रखा हुआ है वैसे तो बहुत सारे हैं
शिन्हा का ये खतरनाक भाई साहब, ये देखो ये शिन्हे है, कितनी प्यारी है ना। ये हुताव है, हाय 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 हाय, नजर ना लगे, अपना हाथ का काम। अरे भाई भाई किधर से किधर जा रहे हैं, कंट्रोल बेबी कंट्रोल। ये वाली गानी अच्छी है, ये वाली गानी अच्छी है, ये वाली मीको अच्छी है, ये वाली योइमिया अच्छी है। वो भी खाता, एक फोल्डर है वो खुल गया तो बवाल हो जाएगा। ये किसका है, कोकोमी का है, ये कुछ ज़्यादा ही है। ये देखो काचिंग की है, काचिंग, इट्स कोचिंग, हाउ सेक्सी सी इज, बैन। छोड़ एक बार सर्च करो इंडियन भाभी हॉट पिक्स, खत्म, मर जाओगे। ये देखो मीको किधर से इसमें सही लग रही है, इधर से तो पीछे से नहीं, गलत हो जाएगा। बैठो और आराम से मीको की ले लो। चलो The grand काम game पे of beetle आते। fighting is a match where your beetle tries to flip the other beetle onto its back. Hey, it's not just some kid's game, okay? There's way more to it than that. I have taken part in more beetle fights than you would believe. At least 800. I may have even crossed the 1,000 mark by this point. Anyway, after a while, you can tell a beetle's fighting potential just by looking at its shape, size, and the patterns on its body. But it's not just about all the physical stuff. Oh no, your Oni Kabuto's got to be in the right headspace as well. If it's not up for a fight or doesn't have the guts, well, then it's game over. वो होनी Boy, चाहिए are ना। you too lucky you ran into me. When it comes to beetles, I'm the expert that the experts go to. I'll show you all जो you है need सो to फुरीना know. है, हाइड्रो आर्कोन। We're not the ones that will be playing. We're just here to keep an eye on you. Oh, फुरीना का सबसे गजब फोटो मैंने रखा हुआ है Anyway, not खुद a से बना problem. के, You एडिट two might करके think I'm just मतलब। tooting my own horns here, but just you wait. I'll make you a beetle expert in no time. And by the way, that kid has one tough beetle. We can't underestimate it. We have to find a real lean, mean मजा है, beetle warrior. मतलब इतना गंदा फोटो नहीं है, अच्छा ही है, बट काफी क्यूट भी लगता है, सेक्सी भी लगता है, वैसा वाला है। Okay, let me see. Ah, there. Let's head to that hill. I'll bet my bottom Mora we're gonna find some major league Oni Kabuto hiding out there. हमारे लाइन वाले हो, बिल्कुल मैं बहुत पहले से हूँ भाई। वो होता तो मैं, मतलब वो होती तो मैं इतना देर गेम खेलता, वो भी पूरे दिन। हाँ हाँ हाँ, Just our luck. Well, hopefully that'll की scare all रियल the गर्लफ्रेंड लुक लाइक फुरीना और Even tough उसकी ones for जीएफ us. ने बोला ये गेम खेले। Darn it, they're बताइए all कितना gone. समझदार है ये। Let's hop down from here and take a look. My gut's telling me that there's a king size. Look, you see all those purple things? It's a whole pile of Oni Kabuto. Now that's what I'm talking about. यहीं पे तो लड़ाई करवाते हैं ना दो ओनी की, एक पत्थर पे। Huh? Oh, what the? Ah, no, not lavender melons. ये रहा। Well, this is the one. This is the one. See? As long as you're in my company, you're guaranteed to find yourself an Oni Kabuto. रूम बंद है, गेट की रूम बंद है तभी तो, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना मैं खोल के दिखाता इतना बढ़िया से, फिर तो लग जाती थी। Yeah, it's on the smaller side, but size isn't everything in a beetle fight. Just let the expert explain, okay? What smaller beetles lack in strength, they make up for in agility. They usually got a whole bunch of sick moves just ready to whip out when the right moment comes. मेरे को ईटो का स्टोरी कुछ इतना भी कुछ बढ़िया नहीं लगता। Listen, you can never see a beetle's true energy until it's in the ring. It might look a bit young and docile, but that's got its advantages. Haven't you ever heard the saying, don't judge a book by its cover?
Young beetles that have never fought before always go all out in their first fight. Older beetles that have already been through the wars tend to just cower in the corner the moment they see a strong opponent. Hey, didn't I say not to worry? Come on, just have a little faith, would ya? My experience is telling me that this Oni Kabuto was spawned to be a champion! Gay, ध्रुविन्यो gay. गान मारने की बातें चाहिए भाई. Right here! Look what Paimon found! If we're gonna battle some beetles, then Paimon wants in! It's not like we have anything else to do. When you hopped down, Paimon flew off somewhere else nearby and found this one! What do you think, Ito? It's big and strong and looks like a real fighter! It matches everything you said about a good fighter, Beetle! Bet the one you guys found must be way bigger. Oh, you got some experience catching beetles too, huh? Nope. This is the first one Paimon's ever caught. Well, looks like you got a real knack for this. You'll be a fellow beetle fighting expert in no time. I mean, not as good as me, but still. Oh, so overall not that good then. Anyway, great. With both your beetle and mine, I can tell this'll finally be the one. This time, I'm gonna win for sure. रेडन बहुत पहले से, ठीक है, जब रेडन मतलब क्या इनाजुमा जब जाना था ना, मतलब गेम बहुत पहले से, तो रेडन जाना था तभी से बोल रहा रेडन रेडन मतलब इतना बढ़िया है. रेडन बढ़िया है, पसंद है, ठीक है. एक पसंद होता है, एक फेवरेट होता है. फेवरेट हाइड्रो है, पसंद रेडन है. समझ में आया? जैसे एक ही हम पसंद है फिर भी अपन M4 चलाते हैं ना, वैसे ही फुरीना पसंद है फिर भी मेरे को रेडन चलाना अच्छा लगता है. समझते नहीं हो यार बात को. You know, that's just life, man. There are so many people in this world who are talented, passionate, but it's no guarantee that things will go their way. So many unrelated things have to come together at once in just the right way to make victory happen. There's this word that really sums it up nicely, actually. It's coincidence. As in pure luck? Huh. Guess it makes no difference कुछ नहीं whether we बोलेंगे. have Paimon's beetle or not then. फोन तो पहले करो. Might as well just... Whoa. Let's not do anything rash here, you know. पैरों में ठंड लगा, मन कर रहा है सॉक्स पहन के बैठ जाऊं. These fine beetles have a shot at winning. Let's just hang on to them and give them both a try. A true warrior never leaves a good beetle behind. Anyway, time to head back and get this show started. Man, I am psyched for this. Woo! Let's go! मेरे को सॉक्स लेके आने दो यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा. पैरों पे ना जितना बर्दाश्त करूँ वो नहीं रहा, बस हो नहीं रहा है. Boring. Isn't there anything else more interesting to do? Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much?
यस गाइज, अब बोलो। कंट्रोल नहीं हो रहा था समझो। हाँ सोचो मोजे पहनकर इतनी देर लगती है क्या? अरे कुछ नहीं। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है मतलब कि तुम सिंगल हो और तुम्हारी उम्र मतलब अब तुम एडल्ट हो चुके हो, तो तुमको मज़ा कैसे आना मांगता बताओ? फ़ोन चार्ज पे है तो जाके मम्मी को परेशान करो जिससे तुमको मज़े आएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं। मैं गया था सॉक्स लेने, तो मेरे को पैर भी धोना था कि थोड़ा साफ साफ हो जाए तो मज़ा आएगा। उसके बाद जाके मम्मी के बाजू का पंखा चालू कर दिया। उसके बाद मैं थोड़े से मज़े लेने लग गया। ए चट चट छो छो छो। यहाँ का थंडर खत्म। ये थंडर कैसा खत्म हुआ है? क्वेस्ट हो रखा है के ना? क्या हो गया? क्वेस्ट तो नहीं हुआ है, फिर थंडर कैसे खत्म हो गया? कोई नहीं कोई नहीं। Finally, you're back. Can we start our पैर beetle तो fight सिर्फ now? बहाना है। Yeah, sure बाकी thing, तो buddy. But you better watch out. लौड़े I brought के a सॉक्स real winner पहनने back this नहीं time. नहीं नहीं नहीं, लौड़े के सॉक्स नहीं Don't पहनते। worry, I'm not scared of your beetle. Go, वो go, शेरवानी होता है। stripy ghost. I got this fight in the bag. Let's go, Nimble Ninja. वो देख देखो यार दुर्विन्यो, वो शेरवानी होता है ठीक है, सॉक्स नहीं होता। तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिल रखी है। Come on, you can take him, little guy. सुअर एक बात बोलनी थी तुमको, बोल डालो। That's right. Finish it. अरे यार सॉक्स को सीधा करो, मतलब पूरा बैलेंस। Oh no, my little Nimble Ninja. मैं निम्बल निंजा। Looks like I win again. Dang it. It's my 7th loss in a row. आज फिर गांधी का फोटो देख रहा था कोने में, सामने लिखा शॉर्ट बाय नाथुराम। ये बढ़िया वाला। हाँ अरे बढ़िया किया थोड़ा सा, लेकिन दुख देना चाहिए था बुड्ढे को। इतना शॉर्टली क्यों मारा, मेरे को यही नहीं। Even Uncle Ito can't beat him. I won't forget this. I'll beat you next time, I swear. नाथुराम कोट्स। All right, Paimon, you're up. Time to give Crimson Cyclone a shot. Maybe it'll end this losing streak of mine. All right, go get him, Crimson Cyclone! Whoa, that one looks ultra strong. But it's still no match for you, Stripey. मजा आता उसी के All right, little guy, use your super Paimon tornado! पहले उसको टांगना था, मतलब ऐसा टांग देते किधर को, और फिर उसके बाद उसके पहले लौड़े में गोली मारना चाहिए था, फिर गांड में एक बांस डालना चाहिए था, फिर साले के ऊपर जाने की इजाज़त मिलती। पता है कुछ लोगों ने ना जितना सही करा है हमारे लाइक हिस्ट्री पे, उतना ही उन सालों की वजह से आज का जनरेशन गांड मरवा रहा है। ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए फिर भी कह रहा हूँ। आज की हिंदू का ना माइंडसेट, कितना भी तुम कुछ कर लो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए या फिर कितने भी मेच्योर हो गए, कुछ भी हो गए, उनकी एक ही बात रहेगी, हम दो हमारे दो। हिंदू के अलावा किसी और रिलीजन में देखो, अरे हम 10 हमारे 20, बहन चो 2 क्रिकेट बनाएंगे जो दोनों साइड से खेलेंगे। लेकिन हिंदू नहीं भाई, या तो हम दोनों कमेंट्री करने वाले बनाएंगे, या एक एम्पायर बनाएंगे और एक एम्पायर सेकेंडरी पे रखेंगे कि उसके कुछ कहीं पे लग गया तो वो आके करेगा, बस यही है। हिंदू कितनी भी अच्छी चीज़ें बातें कर ले, बट हिंदू की माइंडसेट हमेशा वही रहने वाली है जो पहले से अब बन गई है। मैं महात्मा गांडू हूँ। मैं ये नाम सुना सुना सा लग रहा है।
मतलब देखा देखा सा। छलने और कृष्ण की एक्टिंग करता हूँ। अच्छी अच्छी जी 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 जी। मैं महात्मा गांडू हूँ, मैंने वो पढ़ा, ठीक है। छलने और हंसने की एक्टिंग करता हूँ, उसके लिए तो बढ़िया था। रुको, इतना कह रहे हो ना, चलो इस पे नहीं, इस पे। अरे क्या दिखा दिया, आर्क सर्वाइवल। गलत फोटो देख लिया तुमने, ठीक है, वो गलत फोटो था। playark.com देख रहा, 14-15 डॉलर का है। $15 मतलब 1200 रुपये, ठीक है। पहले $25 था। आर्क सर्वाइवल कैसा खरीदूं? भोसरी का तो खुल भी नहीं रहा उस पे। स्टीम पे जल्दी खुलता है, ये देखो। इसमें रियलिस्टिक फील नहीं है, बस ये एक ओपन वर्ल्ड सा है ना। ना रियलिस्टिक फील नहीं है, बट ये एनिमेशंस अच्छे हैं। देखो गेम्स इससे भी बढ़िया बढ़िया मैंने रख रखे हैं, बट सीन वो है कि हम सबको पीसी चाहिए, बस पीसी। बट पीसी में मोबाइल वाले नहीं खेल पाएंगे, मे भी अलग अलग सर्वर हो। इससे अच्छा गॉड ऑफ वॉर खेल लो, इससे बढ़िया गेम्स है मेरे पे, बट पेड है। और उनका पायरेटी वर्जन भी निकालना कि सिर्फ खेलना के पायरेसी वाले गेम, तो फिर पीसी सफिशिएंट नहीं है सबका। इसमें मज़ा नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। ये एक एनिमेशन की दुनिया से भरा हुआ गेम है, मज़ा नहीं आएगा। इससे बढ़िया तो भाई कोई रेसिंग गेम खेले, लाइक फोर्जा 5, होराइजन 5 जो मैं खेल चुका हूँ, वो बढ़िया रहेगा। हाँ, हमें चाहिए गेम लाइक साथ में खेल सके, वही कह रहा हूँ। और सब खेल सके ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ चले, सब खेल सके, कि सबके पीसी पे सपोर्ट करे। Boy, did that one put up a fight! Woo! It wiped the floor with Stripey Ghost. I know a real beetle trainer when I see one. Way to kick some beetle butt, partner. कुछ नहीं आता है। See? Paimon's got real talent. Of course, Crimson Cyclone has to take some of the credit देखो, too. वो सब अपन कितनी भी बातें कर ले, ठीक है, बट उस दुनिया से हम रिलेट नहीं कर सकते खुद को, और मैं तो उस दुनिया से बिल्कुल नहीं रिलेट करता। सिर्फ बातें करो, ठीक है, गेम तक में ठीक है, हेंटाई वगैरह देखना, एनिमे तक ठीक है, रियल वर्ल्ड में वो चीज़ें नहीं है। लाइक गेम तो ऐसा कभी नहीं खेलना मेरे को। Now that the beetle fighting's over and all. साइकोलॉजी को बिगाड़ देगा गेम। This is for you, Daisuke. गेम ऐसा खेलो जिससे तुम्हारी ब्रेन साइकोलॉजी थोड़ी सी ऊपर जाए। You're really giving it to me? रियल वर्ल्ड। Go ahead, take it, Daisuke. When we finally get back to the city, you can show it off to all your friends. But will we ever be able to go back? Of course we will. Trust me. I never go back on my word. Anyway, I got some things I gotta discuss with my friends here. Go play with Granny for a while, would ya? There's a good boy. Good. The kid doesn't suspect a thing. You're from the Tenryou Commission, aren't you? I bet you're here to capture Uncle Ito. Huh? Hey, didn't I tell ya? They're my friends. In fact, they're in the gang. We're practically family. That's not true. I already know everyone in your little gang, but I've never seen these two before. Uncle Ito didn't do anything wrong. Don't take him away. And not only did he not do anything wrong, he also saved my life. He's not a bad guy. मुझे तो लगता है मेरी हरकतों की वजह से मैं पूरी लाइफ इसे रिलेट नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो ये सीखने की चीज़ है। पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, वो सीखते हैं, स्ट्रगल करते सब मुठिया मारने की गेम खेलने के लिए तैयार हैं। हाँ ना,
लॉन्डो को बस कुछ नहीं चाहिए, गेम ऐसा चाहिए जहाँ पे उसे बजा सके। रियल लाइफ में तो बज नहीं रही है कोई। भाई सर को पेल देंगे, मजाक नहीं कर रहे, सर को पेल वापिस से देंगे। 2K करते हैं इस बार, सच में जाके पेल। नहीं 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 नहीं, उसको पेल देंगे। इसका एग्जाम कब आएगा? अरे मैं आर्क की बात कर, मैं घंटा उसमें आर्क में क्या ही अच्छा है, रियलिस्टिक कुछ नहीं दिख रहा ना आर्क में। पहला हर्ष एक लैपटॉप खरीदो एटलीस्ट जिसमें 4090 जीपी हो, ठीक है? गेम मैं लेके आता हूँ, सब नॉटिका खेलेंगे सबके सब। सब नॉटिका सब नॉटिका सबके सब खेलेंगे बस 4090 में। अभी सही है भाई सही। ये बंदा ऑनलाइन कौन? Hey, some things we don't tell to outsiders, remember? How अरे should I बगा लो मैं। explain? I'm a भाई तू real ऑनलाइन कैसे आ गया? lousy liar. Ito, sometimes you need to just say what you have to say. Don't worry about us. I guess. राइट Thanks, याद है Granny. हेलो का है Seems I can't hide it anymore. Come with me. I'll explain everything. हेलो के अरे भैया आ रहा हूँ। सॉरी एक बार तुम्हारे I'll be honest with भाई you. या This बहन thing the Tenryou और Commission is दोस्तों स्ट्रीम पे लिया, investigating मेरा कोई with नहीं है। someone going ये around बहन है, taking भाई कोई नहीं है। people and their possessions, it wasn't me. Any of it. I have my own reasons for lying I'm a about single it, piece. and I really didn't want to get innocent people caught up in this while I'm still trying to solve the real problem here. I'm the same as you. I just want to avoid conflict at all costs. But it's just not worth it if someone gets hurt. So why in the world would you say that you were the culprit? Yo. Maybe you don't know because you're Outlanders, but it all started a long, long time ago with the story of the Crimson Oni and the Blue Oni. Hold on a second. If you're talking about that fairy tale, we've heard that one already. Oh, so you already know. Well, that makes things a whole lot easier. So, is the story from the fairy tale really true? Everything about the fate of the Oni is true. The Blue Oni chose exile, and the Crimson Oni stayed behind. But the other details aren't historically accurate. Fairy tales are nice stories, but there's something they leave out. It's a little thing called the cold, hard truth. The Inazuma of long ago was a dangerous place. If you wanted the Raiden Shogun's protection, you had to have a good relationship with the humans. The Oni are a proud kind, so it wasn't easy for them to ask others for acceptance. Over time, the Oni eventually split into two factions. The Crimson Oni were friendly with the humans, but the Blue Oni, they were more stubborn and insisted on keeping to their own. Paimon thought you were two different species. Hello, I have So top really, 16% you're rating all and check it one out. Yeah, bro. family? Yep, Made that's it right. clear. There's no real difference between us. ये We लिया just ने। paint our horns different colors to show which side we belong to. दो ब्रो ये आईडी दो। जस्ट ओएगर। Because humans were still wary of Oni at the time. The Crimson Oni always hoped to find a way to live in peace with the humans, but the Blue Oni kept clashing with them. Humans didn't see a difference between Crimson and Blue Oni. All they knew was that Oni were hard to get along with. If things were to continue that way, the Oni were never going to get along with humans. And so, the most revered leaders of the Crimson and Blue Oni decided to resolve it once and for all. Over drinks, they swore an oath. The Blue Oni would play the role of Evil Oni to help the Crimson Oni integrate into human society. But the Blue Oni's leader gave two conditions. अरे नंबर भेजो ना बीच में डॉट या स्पेस लगा के आ First, जाएगा। the Oni must abandon any prejudice they held against humanity. Every Oni was to accept humans in their heart before the humans accepted them. Oni were not to use their strength to mistreat humans, but were also not to stand for mistreatment against themselves. Second, the Crimson Oni were to integrate with human society, but not by trying to please the humans. The Oni were to embrace their own honest characters, their surging tempers, and their awesome strength to win respect from the humans. In other words, they were to carry on the Oni bloodline while also protecting our Oni pride.
क्या अंधा नंबर भेज रहे हो? After choosing exile, the number of blue Oni began to dwindle, until eventually, they disappeared altogether. मैं Since I नंबर first heard भेजो the बीच में story of the स्पेस blue या and डॉट crimson वॉट Oni कुछ as a लगा kid, लगा के। I've heard it countless times in my life. Not once did I ever imagine that the blue Oni clan had actually survived. So you're saying the real culprit was a descendant of the blue Oni? That's right. Most people don't pay attention to the color of an Oni's horns. They probably don't even know that blue Oni exist. But nothing gets by the Arataki gang. At the scene of the crime, they saw an Oni with different color horns than mine. Still, it'd be strange if the culprit really was a डॉट या descendant डैश of the लगा blue दो, Oni. अंडरस्कोर लगा दो। Can't bring myself to accept it. Exactly. They would give up their life before abandoning their pride. I've always respected the blue Oni for the sacrifice they made. And I know the aspirations my ancestors had for the future of all Oni. Our pride does not allow for any wrongdoing. You don't steal from other people. You don't harm other people, period. My guess is that the blue Oni was tricked or forced into it somehow. But I don't have any evidence. That's right. If I didn't step in, the Tenryou Commission would have definitely caught them by now. मैं भेज रहा हूँ आया क्या? वैसे नहीं। वही ब्रैकेट वरैकेट अब यूज करो। पता नहीं आप ही का नहीं आ रहा है। सबका आता है। After I sent them running from the scene. He was off playing somewhere when they came by and ransacked his house. By the time he came back, his parents had been taken. The whole reason I'm in this is to help this kid find his mom and dad again. एक बार 69 करा दो सौ लड़की के साथ। हाँ 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 हाँ। गलत बात, गलत बात। I never wanted to tell you any of this. Like this, bro. My original plan was to knock you both out and take my family to hide somewhere else. There's more to this than just one blue Oni. There's a dangerous group behind everything that's been going on. I didn't want to get anyone else caught up in this mess. That's everything. The whole story. If you don't believe me and want to drag me back to Inazuma City, then I'm gonna fight you with all I've got. But if you're willing to believe me, then please, give me a little time. Once I find the blue Oni, I'll turn the both of us in. Yep, Paimon too! Just treat it like we're here to keep an eye on you. So, you... all right. I knew you'd be reasonable. I knew it. I was thinking right from the start. These two fine folks, they're just out here in the pursuit of truth and justice, man. Yeah, we are gonna get along just great. अबे हो गया चल I भाई। should tell you though, वर्ड्स में things भेजो, हाँ could get भेजो a जैसे आ little रहा वैसे dangerous, भेजो। so जब नहीं आ रहा था। be ready for anything. कोई सुनी हो। Don't say that I didn't warn you. Don't worry about us. We're seasoned adventurers. महात्मा गांधी का 3। All right, then our first job is to investigate where this blue Oni is hiding out. There's a victim of his that saw him up close, currently taking refuge at Sangonomiya's camp. I figure we can start by talking to him. देखो मैं उसको इतना टॉलरेट नहीं करता, बता मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ, ठीक है। गांधी को मैं इतना टॉलरेट जितना तुम कर रहे हो इतना मैं नहीं करता। उसने कुछ चीज़ें सही करी हैं, बट उस सही के गलत की जो इम्पैक्ट है वो आज बहुत गलत दिख रहा है। तो उसने मार रखी, ये बात है। फाइट यू 0 3 और 5 3 87520 553 3 3 6 3 3 2। अच्छा हाँ, मिस्टर गेम ओवर। मिस्टर गेम ओवर, बढ़िया। वाल्टन वाल्च पहले यहाँ पे बता देता हूँ, पीसेस पहले देख लें। तो स्टैंड क्या है?
क्रिट रेट ब्रो एटलीस्ट 65 to 70, ठीक है। इनगल्फिंग है तो आपको 150 प्लस और ये 250 प्लस। इतना भी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप जा रहे हो, इतना ईयर नहीं चाहिए। आप 250 260 भी रखोगे ना बहुत है, ठीक। अटैक आपको 1200-1300 रखना पड़ेगा। अटैक मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा है, 1000 कोई अटैक ही नहीं होता एक्चुअली बताऊं तो, ठीक है। दिस पीस इज़ गुड। डिफेंस की माँ का भरोसा, ठीक है खाया, बट ठीक है। दिस वन इज़ गुड। ये भी अच्छा है। इसके अंदर क्रिट रेट लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ईयर फेंक दो, अटैक CDCR इसमें लेके आओ, बढ़िया होगा। या तो यहाँ पे कोई और देखो जिस पे थोड़ा CD हो, अटैक हो, क्योंकि आपके पास अटैक नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करोगे तो सारा हो जाएगा, ठीक है। वेपन अभी तो लेवल नहीं किया, 50 है ना, तो वो तो बेस अटैक सिर्फ बढ़ेगा ना, 1200-1300 आएगा। इनगल्फिंग पे उतना ही थोड़ी ना होता है। इनगल्फिंग का टोटल कितना है? 308। आप पूरा 90 करो तो कर पाऊँगा। CDCR का अगर हिसाब से ठीक हो, ठीक है। बेस को मैं छोड़ देता हूँ, बेस का अगर मैं छोड़ दूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। पैसिव से आता है, आई नो। वो पैसिव ऑल टाइम एक्टिवेट बस्ट मारोगे तो काउंट होता है। पैसिव से 30 यार इसमें जोड़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 312 हो जा रहा है, जो कि इनफ है, मतलब कैप्ड ही हो गया। तो ER को थोड़ा डिक्रीज़ करो एंड CR आप बढ़ाओ, जैसा आपका गॉबलेट जो था ना। CR एटलीस्ट 65 एटलीस्ट करो, जिससे ये बेटर हो सके, ठीक है। क्योंकि 61 पे क्रिट ही नहीं लगने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बाकी आप अगर 90 कर लोगे ये वेपन, ठीक है, तो मैं ये चीज़ बाद में काउंट कर लूँगा, कितना चाहिए होता है वो देखना, कैलकुलेट करना। बाकी ये बढ़ाओ। फर्स्ट डैमेज कितना है पूछो, आप ही बताओ, इतना टैलेंट कितना है इसके साथ। मैं कह सकता हूँ कि 1 लाख प्लस जा रहा है। हाँ 105, ओके। पूरा लेवल अप करोगे ना और इसको एटलीस्ट 65 कर लो अगर वेपन 90, तो आई थिंक आपका डैमेज 1.5 लाख पार होगा, ठीक है। 1.5 लाख पार होगा। शाइट, मेरी बहन ने मुझे लौरी गारी, अच्छा बड़ी वाली गिफ्ट की, मैंने उसके नाम दिल्लरी रख दिया। बहन दी लौरी तो ओके ब्रो, ओके। हाउ इज़ माई बिल्ड नाउ। अगर आप वेपन 90 करोगे तो ठीक है, आप इसको 65 कर लो, बहुत अच्छा बिल्ड है, ठीक है। ER थोड़ा डिक्रीज़ करो, आई सजेस्ट कि ER आप डिक्रीज़ करो एंड CDCR पे काम करो। इतना भी ER नहीं चाहिए होता है, तो मैं दो पीस रिकमेंड करूँगा, ये बढ़िया है। बट फ्यूचर में अगर अपग्रेड मिले इसका, क्रिट रेट क्रिट डैमेज बढ़ के, तो बदल दो, डेफिनेटली बदल दो, ये अच्छा है। बट इसके बदले CDCR अटैक कोई आए तो बदल देना, इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसको कर सको तो करना, इतना मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसके अंदर CD लेके भी आना भाई मुमकिन नहीं है। ये डेफिनेटली करना, इलेक्ट्रो डैमेज ही रहेगा, बस उसको डेफिनेटली करो, बढ़िया हो जाएगा। बेस अटैक भी आपका बहुत आ जाएगा। 2 पीस जो फॉरएवर के लिए है ये दोनों, बाकी आप थोड़ा सा इम्प्रूव करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ तो गॉबलेट थोड़ा सा CDCR जब आ जाएगा ना तो काउंट करने में मज़ा आएगा। इतना ही बोलूँगा, अगर मेरे को दोबारा आप नहीं भी दिखाते हो कोई बात नहीं है, बट आई सजेस्ट कि आप इसको 1300-1400 कुछ लेके एटलीस्ट उतना आपका होना चाहिए सोलो पे, तो फिर बढ़िया, एटलीस्ट उतना होना चाहिए तो ही बढ़िया होगा। बहुत बेकार बिल्ड मेरे को दे दो वापस। मेरे को रेडन तो बहुत पहले ही मैंने ले लिया था, अब तो पूछी वो नहीं प्राइड। यहाँ पे शायद से एक डोमेन आता है ना, खोपचे पे जाना रहता है पानी के पास। छोड़ो, मेरे को इतना अच्छा, ठीक है। ओनी प्राइड
लास्ट ही है, बहुत बातें हो गई। अब डेली करना है, इससे बात करूँगा। आर्कून ऑलमोस्ट खुल गया होगा। नहीं, पहला क्याज़म कार कल वेपन कार्ड में, कल सैटरडे है। कल नहीं होगा तो परसों तो डेफिनेटली होगा। मेरे को इतना याद नहीं सैटरडे को आता है कि नहीं इनगल्फिंग का। अब कितने साल हो गए मेरे को खुद याद नहीं है। 1 साल से ज़्यादा हो गया रेडन को। अभी तो इसको आन दे, पहला इसको C2 करेंगे, फिर उसके बाद कोई और बात करेंगे किसी और कैरेक्टर का। सीज़न 3 आ रहा है क्या? फिर तो देखना प्रेफर करूँगा। इधर से क्यों नहीं चढ़ती यार, इतनी बड़ी तो वुड है। आई एम एन F2 पिक बाय द वे। आई एम ऑल्सो ब्रो। मीचू मैंने ज़िंदगी में 1-2 बार वेल्किन ले रखा है, बट किसी और अकाउंट पे। बट फुल An Oni? Oh no, not another one! Oh, yeah. Not the one that robbed you, though, so, एशिया में सबसे रिचेस्ट अकाउंट कौन सा है? शायद से रसू का है। Right. ओजी रसू। I'm still a bit on edge after the incident. पुराने टाइम में फ्रेंड में था। So anyway, here's what अभी happened. बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। I was just out transporting some goods when a group of Ronin suddenly attacked me. It's not the first time that's happened to me. Usually you just hand over some Mora and they'll leave you alone. At least you don't lose your goods that way. But this time was different. अंधा खर्चा कर रखा They बंदे weren't ने, willing to 10 talk things over. 12 लाख से ज़्यादा। Instead, they took my things and they started coming for me. Huh? That's totally uncalled for! I got down on my knees and begged. OG Said I had a family to care for and that my business is our only livelihood. Then I saw that there was an Oni among the group. I thought he was going to be the one to finish me off. उसने आज से 1-1.5 साल पहले उसने 9 लाख के आसपास खर्चा कर चुका था गेम में, वो जेंशिन में अकेला। झारखंड का है वो। Yeah, that got them all arguing with each other. His cohort said that I was sure to retaliate if they released me. But the young Oni was insistent that they shouldn't lay a finger on me. Things got real heated. I thought they were gonna come to blows. Luckily, they let me escape with my life in the end. And I scrambled to get myself here, where I'd be safe. आज ही आया है। Okay, फ्री में देखने को मिलेगा। I never want to set foot outside of here again. So he'll steal, but he won't harm people. Seems he has some sort of standards. Did he say why they were robbing you? फ्री होगा तो देख लूँगा। पेड होगा तो Surely फिर it was Mora, नहीं right? पता। What else could they have wanted with me? I mean, I can't say for sure. It's not like I asked. But what I did hear them say was, the goods are worth more than the merchant's life. Or something like that. मैं निकालता हूँ, यूआईडी देता हूँ, रुको। Do you have any idea where they went after they robbed you? I have no clue. But I think they're pretty active in the Tatarasuna area. You weren't gonna go after them, are you? Seriously, I'd advise against it. There are too many of them and they're all heavily armed. Don't worry. It's just a bunch of no-name scumbags. I got a whole laundry list of scores to settle with them. If these two islands are where they tend to hang around, we're sure to run into them at Nazuchi Beach sooner or later. आजकल ये पूरा लाइव भी नहीं रह रहा ना, ये तो अलग लेवल का लोचा इसने कर रखा है। पहले पूरा दिन रहता, मतलब पूरा रात में खेलता रहता था। नोट करो 8100 8100 75203। रसू लो मिल गया। C6 जितना वर्थ इट है ना, ये सब पे जा चुका है। इसने सब हाइड कर दिया भाई सब हाइड कर दिया। होमलेस RFI, रिफाइनमेंट RFI, गंदे लेवल पे ये खर्चा है।
2600 अटैक, फ्रीज गानियो बिलियार्ड, 35000 बस्ट। ओ माय गॉड, Osmanthus wine tastes the same. अब 2 पीस अच्छे हाइब्रिड बिल्ड है। As Manthan as why. They the same as I remember, but where are those who share all the memories? As Manthan as wine, Jongli Dada. अकेला वो बुढ़ा 6000 साल का है, 5000 साल का। आर्कोन में सबसे पुराना जोंगली है और सबसे न्यू वेंटी है। They gotta pass through here sometime. Let's just hang tight for a while. If I'm not mistaken, they'll be showing up any time now. Yeah, things might get a little rough, so we better be prepared. Oh, here they come! Yeah, there they are. And one of them has horns. All right, it's go time. Let's get him. डैडी बोलो डैडी। डैडी ये ईटो ओनी कमिंग थ्रू। नोब्लेस, ये नोब्लेस ही रहता है। मैंने खेल रखा है इसलिए याद है। ईटो ओनी गैया, इसको गैया बोलते हैं, गैया। स्टैक नहीं, अच्छा ये बढ़िया है। Looks like you fellas aren't going down without a fight. Fine by me. Fight first, talk later. गैया नहीं, गैया कहते हैं थोड़ी ना। स्टैक आने दो, फुल स्टैक। Let's roll. फुल स्टैक ब्रो, फुल स्टैक। 5 स्टैक आ गया ना, फुल। Attaboy. Attaboy. Give me a second. It's a lucky day. Give me a second. It's my lucky boy. Hello guys, Ata boy. Coming boy, Oni boy, Ata boy. आटा boy नहीं, ठीक है ना? Ata boy. It's Ata boy. Full stack. ये मैंने escape कर दिया। अबे यार स्किप किया तो। ओह टाइम लग गया ना इसको। ठीक है, सारे स्टैक जल्दी आ जाओ। एक और स्टैक हो चुका है।
It's showtime! Yes. Yes, yes, yes. ये बात ऐसे ही तो चलता मजा आता है. Hey, don't even think about running. It's me, Arataki Ito, descendant of the Crimson Oni. I know who you are. From the day we are born, every blue Oni knows their purpose. We all know our fate is one of self-sacrifice. But what about the Crimson Oni, You don't know anything about us. Not our miserable history, or any of our names. Mine's Takuya, by the way. But you don't even care, do you? Because those who get sacrificed should be forgotten, right? D. No, you're wrong. I never knew the Blue Oni had survived to this day, and the moment I found out, I was determined that I would find you. Since you remember the pact between our two factions, I assume you also remember the pride we share as Oni. So my question is, how could a proud Oni like yourself go and abuse the weak and plunder the innocent? Why break the oath that our kind swore all those years ago? Huh? What's so funny? Who are you to talk about pride and oaths with me? The Blue Oni gave up everything, just so the Crimson Oni could live peacefully in human society. But let me ask you, Arataki Ito, what exactly do you contribute to human society? You're a blundering fool who can't hold down a real job, a laughingstock of the town, and worse still, you let them get your vision during the Vision Hunt decree. Protecting the Oni pride? Ha! You wouldn't know how if you tried. You're a disgrace to the Oni kind. Hey, come on. None of that stuff's a big deal. I mean, you're really hanging me out to dry here, man. Since when do you care what other people think? You just do whatever you want. It's not like anyone can stop you. But do you have any idea of the kind of life my kin and I have lived while you've been hanging around in human society? We were cut off from the rest of the world. We severed all contact with it. And since then, we've had no place to live, no stable source of food, no clothing, no medicine, nothing. Besides the oath we swore to uphold in our so-called Oni pride, we had nothing. So, that's why you joined a band of thieves? That's right. Why should I accept that life? Is holding fast to a worthless oath supposed to help me provide for my family and friends? I've abandoned our Oni pride. It's meaningless. I want to live. I've given everything that I've stolen from humans to my community. What I've taken will at least keep them from starving and ease their pain. That's what matters most to me. Yeah, and besides, the Blue Oni sacrificed themselves so that Oni could be accepted as part of human society. If people see Oni causing trouble again, then that'll defeat the whole purpose of the sacrifice you made. You make a good point. But Arataki Ito's the one who needs to get that into his thick skull. The Blue Oni are the bad guys, so we're expected to do bad things. Our actions won't tarnish the reputation of the Crimson Oni. Unless, of course, this bonehead decides it'd be a great idea to take all the blame for himself, completely destroying the trust between humans and the Crimson Oni in the process. He's the one that wasted the sacrifice we made. Huh? Well, I only had to do that because of you. I couldn't just stand back and let the Tenryou Commission drag you away. You should get your priorities straight.
The blue Oni are history, all right? Forget about us. The crimson Oni are the ones who must live on. Why couldn't you have just stayed out of this? There they are! Seize them! Oh no! It's the Tenryo Commission! Forget it. This was a waste of time anyway. Look, I don't expect you to understand me, but you could at least take a look in the mirror sometime. Hey! Hey! ये कोई बात थोड़ी ना हुआ. He got away! Uh-oh, we need to get out of here too! We can't get caught here. Looks like I'm up to bat. Just wait here, and we'll escape together when the time's right. Whatever you do, don't attack any of the Tenryo Commission, or they'll be after you too. Who goes there? Soldiers! Soldiers? काय बात के लिए बे? Come on, men. He won't get away this time. Just give yourself up, Arataki Ito. ग्रेट शॉट कैरेक्टर सारे मजे नहीं आते भाई. Withdraw. Can't catch me. Alt घर लेके जाऊंगा. लिवे में अंडर वाटर जा सकते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं है. क्या था बे? हुआ. Man, they really came out in force today. I'm kind of flattered the Tenryo Commission sent so many. But I still haven't completely recovered from the bean attack earlier. I'm starting to lose my edge here. No way. All that would do is send them after our blue Oni friend instead. But I have to settle things with them first, man to man. Then what should we do? The Tenryo Commission's about to arrest you! No choice but to keep kicking some Tenryo butt! Hey, boss! Thought you'd have all the fun without us? Granny Oni sent us. We're here to lend a hand. Maybe we can't take him, but we can sure slow him down. Now's your chance! Go! Hey, I told you to stay out of this one. Well, we're in it now. Come on, there's no time! Go! Do what you gotta do, boss! All right, then. Watch yourselves. Soon as I'm done, I'm coming back for you. Come on, you two. Time to roll! Don't let them get away! After them! Hey, you guys want some of this? There's plenty to go around. Run for it, boss! मज़ा नहीं आया. ईटो क्वेस्ट में थोड़ा भी मज़ा नहीं है. As boss of the Arataki gang, getting rescued by my own boys feels pretty humiliating. यहाँ पर डोमेन में होगा ना? हाँ, डोमेन में जाना है. Got some footprints to follow. Let's find. Huh? Is it just me, or are there more and more footprints here? मेरा ठीक है ना, चलना सीधा डोमेन में We know we're headed चलता the हूँ. right way. Let's see what else we can find ahead. अच्छा, सीधा डोमेन में एंट्री नहीं देगा. ठीक है भाई. A wrecked cart and some goods. Look alive, we've got company. I see everything. How's this? I swear by my sword. कैसा रहेगा फॉरीना ट्रिपल क्राउन? Seems they definitely don't want us going any further. Let's see what's waiting for us up ahead. Only I want. Huh. Besides the footprints, there are other signs of life here too. Must be hidden entrance. Yes! All right. I think we just found their hideout. This is going to be where they keep all the people they took. Paimon thinks Takuya's probably in there as well. Huh? Fire away? Of course I did. Come on, I'm not that dumb. But it takes a world-class blockhead like Takuya to think his ideas are actually gonna work. So I'm here to save him no matter what. Huh? What
you talking about? Are you keeping Paimon in the dark again? बढ़िया। इस गेम में बहुत सारी चीज़ें बहुत बेकार है, बहुत सारी चीज़ें ठीक ठाक है। 2 क्वेस्ट करते करते मेरे को दिन बीत गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखते हैं रिटर्न अभी है। कैलकुलेशन करना है कब तक वो फरीना आने वाली है, तब तक मैं क्या कर सकता हूँ, कितना सेव कर सकता हूँ। All acquired by less than legitimate means, no doubt. And all the more reason we gotta put an end to this. Attaboy! Finally, कुछ भी करूँगा, ग्रेट सोर्ड कैरेक्टर कभी नहीं निकालूंगा मैं। जैसा कि मैंने देख रखा है, सोच रखा है। मज़ा ही नहीं आता है ग्रेट सोर्ड में। ना घुमा घुमा के जाना होता है। See? What did I tell you? Just trust my instincts. Give me a second. Arataki numero uno Ito here in the flesh. Don't underestimate the beetle. They can be some of the toughest little guys around. Yes, you can. Yes, you can. Want to know what's on this beetle's diet? Sweat and tears, that's what. That's how it gets stronger. I think we can all learn something from that.
Arataki numero uno Ito here in the flesh. Don't underestimate the beetle. They can be some of the toughest little guys around. Yes, you can. Yes, you can. Want to know what's on this beetle's diet? Sweat and tears, that's what. That's how it gets stronger. I think we can all learn something from that. Arataki numero uno Ito here in the flesh. Yes boy. फोन करना होगा चार्ज. बीटी हो गई बीटी. The 10 real commission. Can't catch me. ला 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 ला. Everyone hold hands. इसका हाइपिंग में बहुत इशू लग रहा है यार. Who wants some of this? Attaboy! To the very end. To the very end. Can't catch me. Can't catch me. Can't catch me. गजब है यार ये, मतलब घुमा घुमा के फिर मेरे में अंडर होना कुछ दिखाता. किधर लिवे का ही ना.
हाँ मेरे वर्ल्ड में इंटर होना कुछ दिखाता, किधर इंटर होना? मेरे वर्ल्ड में ही दिखाएगा, लेकिन किधर एंटर होने का दिखाता? अंडरग्राउंड वहाँ पे कुछ नहीं अभी। चैन्यूवेल आएगा, उसमें भी नहीं रहेगा। Must be holding on to them for leverage. All right, let's get them out of here. C6 सीटों बन जाता रे यार। Okay, that one hurt. Attaboy! ओ गैया बोल रहा है। You're all free to go now. Quick! Sorry, but have you seen our little boy? We're awfully worried about him. Calm down, dear. We don't even know if he was taken here or not. Sugimoto. But... Oh, my little Daisuke! Oh, you must be Daisuke's parents! Yes, that's right! Have you seen him? Where is he? Is he all right? Don't worry, he's safe and sound. Someone's looking after him now on Yashiori Island. I can show you where on the map. He's been worried about you. I bet he'll be relieved to see you. You were the one who saved him? Oh, thank you, thank you! No, please, no. No need to thank me. It's ये my डोमेन pleasure, टूटने वाला really. है। It's just who I am. It's what I do. ये डोमेन अब Before टूटने you go वाला calling है। me a hero, let me ask you this. Wouldn't any other self-respecting guy who saw another person in danger have done the exact same thing? Really? Just one little compliment and it goes straight to his head. These vagrants are insatiable. They'll do anything for money. No one dares stand up to them for fear of what they might do. Would they really do anything drastic? No, actually, because one of the guys, the one with Oni horns on his head, has always shielded us so far. Oh, in fact, his horns look just like the ones this guy has. At night, he would secretly bring us food and water. I don't understand what Give he me was a trying to second, do. boy. Are you a friend of his? Or perhaps a relative?
Yo, Perry boy, hello, bro. Hello. Are you a friend of perhaps better? Relative, I guess. Oh, maybe there's something secretly troubling him. He seemed different from the rest of the gang. They seem like heartless crooks, but I'd say he comes across more like a confused child who made some poor choices. Let me put it this way. There are a few things he needs to straighten out in his head, and I'm here to point him in the right direction. I'm glad to hear that. He's lucky to have family like you. Don't worry. He'll be in my trusty hands. I'll help him see the light. Anyway, you should scram. It's still not safe here. Yes, thanks again. You've rescued our entire family. We are indebted to you. Huh. A child that made some poor choices. Anyway, let's get going, while we still have time. Yes, boy. Can't catch me. This is the place. The jig's up. Surrender while you can. Let's roll! Who wants some of this? Oh, bomb. Boom. How's this? Attaboy! Let's roll! Oni, it's my turn. Won, don't ya? So naive. This is my home turf. I'll let you in on a little secret. A long time ago, I picked up this rare paper charm. It's very precious to me. What makes it so special is that if you tear one piece, the other piece starts tearing too. Newsflash, don't care about your cute little origami obsession. You better stay where you are and let me finish. Aren't you curious what the other piece is used for? I'll tell you. It's now the critical component of a mechanism, and when it gets torn, this place goes up in smoke. Yeah, the whole hideout is rigged with explosives and ready to blow. What? You're gonna blow this whole place up? You're a good killer too. Oh, don't worry about me. I made sure that I've got an escape route. The rest of you, though, you're gonna be buried deep among the rubble. You've had your fun. Now it's goodbye. My paper charm! Where's my paper charm? Oh, I'm sorry. Are you looking for this? Yes, that's it. But when did you... I snatched it earlier, to stop you from doing anything hasty. Why, you... And now you're going to betray me? You're one to talk. What about burying everyone here? If you ask me, that sounds like you've already betrayed our agreement, no? Just give it here! You done talking now? Huh? You sure? Great, because I'm done listening. Yeah! बढ़िया भाई बढ़िया. Great work, Takuya. You arrived in the nick of time. Stay away from me. Huh? I said stay away, or I'll tear the paper charm. Hey, oh, okay. Fine. Just calm down. What are you doing? Just because I won't let him blow this place to bits doesn't mean that I won't do it myself. Unless you want to get buried, you should leave this place now. Take everyone here and get out! You won't go through with it. If you were that cruel, then why bother protecting every person you've come across? Huh? I'm not here to reason with you. Go! Just get out of here! This sacrifice is mine to make. Mine alone!
Why couldn't you just stay out of it? No one needs to sacrifice themselves. All right, then you tell me. What am I supposed to do? I've tarnished our Oni pride and abandoned our ancestors' oath. Only sacrifice can restore my pride now. I chose this path so I could provide for my fellow Oni. I was ready to die from the very beginning. This is between us blue Oni. But you... if it wasn't for you, everything would have worked out perfectly! They're here! We won't let them slip away this time! Uh-oh! There's nowhere else to run! Hey, Tenryo Commission! I'm the one you're looking for. I did it. I'm behind everything. Arataki Ito is innocent. You're the ones in charge of detaining criminals in human society, right? I'm sure you can tell who the criminal is here. Huh? It's like he's trying to reenact the fairy tale, sacrificing himself for the Crimson Oni! Ignore him. He doesn't know what he's talking about. It's me you've been looking for, and here I am! How are you ever gonna report back without capturing me? Stop fooling around, Ito! Listen, Takuya, sacrificing yourself won't solve anything. Your sacrifice can't protect me or your fellow Oni, and giving up your life isn't gonna make theirs any longer. Sacrificing yourself is one way to escape your fate, but the only one you'll be setting free is yourself. Listen to me. You want to be the tough guy? Huh? Well, this is the coward's way out. Don't let your sacrifice stain our Oni pride. The blue Oni have been scraping the bottom of the barrel all these years, so let's give them a new beginning. We've made mistakes, but we can make up for them. Fate hasn't been kind to the Oni? Well then let's tear it up and start over. But before any of that can happen, you need to get yourself behind me and forget about all that self-sacrifice stuff. Now let's go. But we're not done talking about this. Takuya! I'll take care of this. There are still people in danger. Go, help them! What? Hey, I got this. Come on! Forget about me! Just go! It's what I deserve! Ah, shut up, would ya? गजब. We managed to save everyone! But what about Ito and Takuya? Paimon hopes they're alright. Let's wait a little longer. It will take care of it. जानबूझ के Good. ब्रेसेस लगवाने थे ना इस चक्कर में. That's gonna hurt tomorrow. अपने मुंह में सीधे लगाओ मुझे What's पता up with नहीं the है. looks on your faces? क्या हो रहा है? I said we'd be okay, didn't I? उल्टी सी I'm आती sure है I'd be इसको looking a लगाने के whole बाद. lot sharper right now if it नहीं. wasn't for that brutal ऐसा कुछ bean नहीं होता. attack of yours earlier. Yeah. मेरे को अजीब लगता है. भोसड़ी के तूने कब लगवा लिया? उसकी स्मेल. जब तो उनके जाओगे मेडिकल से आया. Why would you do this for me? I'm the guilty one here. I don't deserve this. Because we're Oni, that's why. We share the same blood, brother. Our parents and their parents before them never taught us that it was okay to abandon family in need. I just wish you'd come to find me sooner. If you knew about me all along, then you should have come and asked me for help. I never would have dreamed of turning you away.
The blue Oni disappeared so that they wouldn't bring trouble to the Crimson Oni. If I came to you for help, wouldn't that just undo everything the blue Oni have done? Not to me. I've always respected the Blue Oni for their sacrifice. Nothing they did was in vain. It's only because of them that we have survived to see today, and built a world where Oni and humans can live side by side. Honestly, everything that I have now, I owe to the Blue Oni. And let me tell you, the Inazuma of today wouldn't see you as a villain just because of the color of your horns. You say all that, but in spite of everything, you're barely getting by. That's just how I roll, man. You remember the pact, don't you? We're not supposed to suck up to the humans. We're supposed to earn their respect. Every member of the Arataki gangs had a tough time trying to fit in. Take Akira, for example. He snores like you wouldn't believe. Or Genta. He's got a serious temper problem. And Mamoru, well, he's colorblind. Even Granny Oni. She got that name for taking me in as a kid. We're all rejects and outcasts in some way, but we don't care. You want to talk about pride? Well, in our gang, we're proud to welcome anyone who's been through adversity with open arms. But don't worry. The Arataki gang's already a bunch of misfits. You really think you could cramp our style? We've dealt with the Kairagi and the people they took captive. I assume the two of you are finished talking. Takia, based on the findings of our investigation, I hereby announce that you are officially under arrest for forceful seizure of people and property. Please do not attempt to resist. All stolen articles will be reclaimed. That means we'll be seizing all the goods you passed on to your kin. no, please don't! Without those goods, they'll... It's all right, Takuya. Those goods never belonged to us anyway. Don't worry. I'll help take care of your kin. Now that I know the situation, I'll personally make sure they never suffer again. Might want to put your grand plans on hold there. You're under arrest too, for numerous assaults on the Tenryou Commission officers. Oh! Yeah, I guess I forgot about that. But no worries, I'll put my gang on the case. My boys will take good care of the Blue Oni. Yeah, we've already arrested them too. Oh, right, yeah, That's what they get for resisting the Tenryou Commission. Yeah, I guess it's up to you then, Traveler. Could you be a pal and tell Granny Oni about the Blue Oni situation? Yeah, I know the drill. This isn't my first time. And it probably won't be my last. As for you two, lending them your aid when you knew full well they were in the wrong means that the culpability extends to you too. But, given your unique circumstances, and in light of the complexity of this case, we won't press charges this time. Sorry for the trouble. Hey, wait! Unique circumstances? Are these guys like a big deal or something? Oh, yeah, okay. Cool. Because I was gonna say, you know, like, I'm kind of a big deal myself, you know? Yeah, all right, see you next time. Whenever that'll be. बढ़िया Well, he's pretty. Weird. आज क्वेस्ट करते करते दिन बिता दिया मैंने अरे भाई कोई नहीं once I clear this quest then I'll do something चलो डेली भी कर लेते हैं अब और एक कंडेंस भी बना लेते हैं Ah, yes. That does sound like my Ito. So, did they take Uncle Ito away? Yes, they did. But don't be too upset, Daisuke. We will have the chance to see him again. He and his gang may have acted recklessly, but the fact remains that he still helped us. Yeah, I knew it! Uncle Ito helped us, and he's awesome! Now, don't get any ideas, Daisuke.
Ito is a far cry from awesome. He still caused a lot of trouble for a lot of people. If you ask me, I'd say he's like one of those little Oni Kabuto you kids are playing with all the time. Though he looks fierce on the outside, he has a kind heart. He's not a delinquent, but he'll never back down from a fight. I don't really get it, but it sounds like a compliment. I can't wait for my next beetle fight with Uncle Ito. Thank you, Granny, for taking care of our little boy. I hope that Ito and his friends will be released as quickly as possible. Yes, you needn't worry. The officials in the Tenryo Commission will certainly exercise sound judgment. It's time we started heading back. We'll be sure to visit again soon. Ah, I'm glad that everything was resolved in the end. Things were looking quite dire, but now the future looks bright. Wonderful, wonderful. As for the Blue Oni, just leave them to me. If there's one thing an old granny like myself can do, it's caring for others. तू अकाउंट रिव्यू कर रहा है? Do you need our help? No, no. Go on ahead. I'm sure you have other adventures beckoning. Besides, once Ito is released, he'll be here to help me. Oh, yes. And you know what? I think that's what makes him adorable. Wouldn't you agree? He does whatever he puts his mind to. He's sincere, brave, and determined. Back when I took him in, everyone thought I was most unusual indeed. They started calling me Granny Oni. But I've never been ashamed of this name. On the contrary, I'm quite proud of it. Because Ito is my pride and joy. A long, long time ago, in a village lost to time, there lived a crimson Oni and a blue Oni. They were the best of friends. The crimson Oni wanted to be friends with the humans, so the blue Oni played the role of the naughty kid. And then he left. After a long time, the crimson Oni was living happily with the humans, but in his heart, he wanted to bring the blue Oni back home. The crimson Oni didn't know where to find the blue Oni. His search took him up the highest mountains and across the widest rivers. He found many traces of the blue Oni, but the more he found, the clearer it became. The blue Oni was hiding on purpose. So just as the blue Oni had once done, the crimson Oni left him a letter. Dear Al, I've made lots of human friends now, and I want to have a big party for everyone. I want all my friends to be there. That means you too, Al. If you don't want to meet me, you can just watch from a distance. The blue Oni snuck back to the village and hid in the shadows. He saw the great feast and roaring fire and longed to join in. But though his stomach rumbled, the blue Oni remembered the oath of old and kept his distance. Suddenly, he jumped. The crimson Oni was right behind him. Hey, you're finally back. Come on, I'll introduce you. It's time everyone met my best friend. Hey, traveler! खत्म बोलते public. Pit at the bottom of the chasm? You know, the one that the giant pillar smashed into. Finally, सारी quest खुल के गए. पढ़ी. चलो
आप डिलीवरी करते मस्त बिंदास, कल करेंगे कैज़म का आर्कॉन। तू डेली कर रहा है, मैं अभी इवेंट कर रहा हूँ, दो इवेंट। ओके डार्लिंग, रिटर्न आ गई ये देख। फिर से बेनिट, भाई इतना प्यार हो गया कि बेनिट को मेरे से। C4 हो गया। थैंक यू। अरे माय गॉड भाई, अर्ली 4 स्टार चिपका दी इस गेम में। मजा आ गया, मजा। बेनी सी क्या करेगा? यूजिंग अ नॉर्मल अटैक। अच्छा ई होल्डी का है ना शायद से। सेकंड ओके होल्डी का है। आ गया भाई। एक और सारा C1। अब क्या चाहिए सारा? गलत 5 सारा। जल्दी जल्दी सारा दे दे रही। दो दिन बाकी है। वीकली सारा हो गया, रेसन बाकी है, एक सर्वे बाकी है। डेली का मिशंस कलेक्ट कर लिया जाए। Oh, so you've been wondering about that too, huh? Now that we have some time on our hands, let's go and take another look. टीपॉट गए हुए कितना टाइम हो गया अबे? क्या हो गया? Thank you for Add Ast. पहला टीपॉट घूम के आऊँ, फिर उसके बाद जाऊंगा। ओनी काबूतो क्या? This realm. Really क्या? रिलेम टीपॉट। अभी मैंने ये भी नहीं खरीदा था। और तेरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो भाई मोरा है। If you ever. वीकली सब मार लेना, हर्षू का वीकली बाकी है। ये 20 फार्म करना है ना, तो कल ही करूँगा।
कल फार्म भी करेंगे और कल ही बूम बाम करेंगे। Peace and good health. सुबह में 3 बनेगा तो 12 हो जाएगा। रेजाइल रेजिन भी है। Should be enjoyed by all. If I can provide everyone with a life. Gratitude. अब कैरेक्टर 80 तक आने को तैयार है। दो और हो जाएगा। चलो राइडन तो 90 तक तो पहुंचा दो अब तो हो जाए। थैंक्यू के लिए कितना है? बढ़िया। कल सैटरडे है। आज का आज करता हूँ खत्म, कल का कल सेव करके पूरा कर दूंगा। बूम बाम। Stay cool, face your guild. मजा नहीं आ रहा। Mon review Haizu. Haizu Big Bang. Boom boom. Yeah boy. 819 712 989. Sim Haizu. Gazab. C6 not nice. Atlas has it. Oh my god. What the fudge, bro? सीडी वेपन बनता है यार। सीडी वेपन का ये बढ़िया।
क्वाइट गुड है, बढ़िया में क्वाइट गुड है। ये दोनों पीस चेंज होगा, ये भी होगा, इतना खास नहीं लगा। ये सब ये बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। वीवी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, बाकी वो दोनों अच्छे हैं। बिकॉज ये अटैक ओवर जा रहा है, 2000 के आसपास भी हो तो काफ़ी है। सीआर थोड़ा 65 70, सीडी तो भाई पूरा डम डम है डम। सीआर थोड़ा कम करो, थोड़ा सीआर बढ़ा, थोड़ा सीडी बढ़ा, थोड़ा अटैक कम करो। ये वाला डैमेज कितना दे रहा है वैसे? अयो विकसित नहीं है क्या? F1 पे हो तो बहुत सारी वेपन्स होंगी। F2P ऐसा है। क्रिट बिल्ड, ना तो ये क्रिट बिल्ड है, ना तो ये EM बिल्ड है। ये क्या, कुछ है ही नहीं। नॉट इम्प्रेसिव, बेकार बेकार, पूरा बेकार है ये। या तो आप ट्रिपल EM इसको बिल्ड कर लो सब स्टैट पे ER लेके, या तो क्रिट बिल्ड कर लो। एलिमेंटल मास्टरी, एनिमो डैमेज बोनस क्रिट। दिस वन इज गुड बट ER नेगेटिव है। टीम क्या बात है? मोनो अनीमो है या फिर सुक्रोस 300 ER तो बढ़िया है। क्वाइट बैलेंस 300। बिल्ड अच्छा है, ER थोड़ा नेगेटिव है, बिल्ड अच्छा है। शिपू शाम चलाएंगे। मत बोलना लप्पू सा तो सावा। अबे तेरा है तो मैं उसमें के करूँ? तू लप्पू, तेरा श्याव लप्पू। सुनीला की ऑर्डर पर मर्डर करे, पवले तू बारू रंग तार मारता। छी भाई। What a bullshit man. लाखों का माला लेके जो मैं काला तार रे ई। ना भी 60% जाएगा। क्वाइट बैलेंस, डबल हीलर। चल ब्रो, जीन की हीलिंग। सुनीला की ऑर्डर पर मर्डर करे, तो बोलो रंग तार मारता। Barbados! Show an interest! Let miners throw in song! Let's light it up! Venture a round of applause! Step right up! सबका फोकस बड़े वालों पे ही है। I swear by my soul! DreamWorks! Let's get this show on the road right now! इन्हें गलत लीने लिटरली गलत पीस है। सुनीला की ऑर्डर पर मर्डर करे। रहने दो यार। चलो गाइस, हैव अ बॉय उस वाले पे कंडेंस बना के कर लूँगा फार्म में। कल मिलते हैं। मैं शिमेनावा बोल रहा हूँ।